Good morning, everyone. Greetings to all the participants joining us from school, diploma institution, college, and academia industry. Welcome to the 5-day online training program on Introduction to Additive Manufacturing and Design Thinking Fundamentals, organized by Center of Excellence, Maharana Pratap Institute of Technology, Gorakhpur. In collaboration with Innovation Hub, Uttar Pradesh, the Center of Excellence at MPIT Gorakhpur has been established with the vision of promoting emerging technologies, innovation, interdisciplinary learning, and industry-oriented skill development through technology-driven institution. This program is one of our early initiatives aimed at making emerging technologies accessible to learners from diverse educational backgrounds. We shall begin shortly. Meanwhile, participants are requested to remain connected and kindly keep microphones muted. We will now play a brief introduction video of Center of Excellence MPIT Gorakhpur. ज्ञान और राष्ट्र निर्माण का संगम गोरखपुर एक ऐसी भूमि जहाँ विचार केवल जन्म नहीं लेते बल्कि युगों को दिशा देते हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ की इस Is the video is audible to everyone? Okay, so proceed. अध्यात्म अरे यार और राष्ट्र निर्माण का संगम एक ऐसी जहाँ विचार केवल जन्म नहीं लेते बल्कि महायोगी गुरु गोरखनाथ की इस पावन पर सन 1925 में एक विचार अंकुरित हुआ जब ब्रह्मलीन में जी महाराज ने महाराणा प्रताप शिक्षा किया है जहाँ हजारों विद्यार्थी और कर्मचारी राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा का हिस्सा है। इसी यात्रा में स्थापित महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक दशकों तक तैयार किए। 2021 में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य नई दिशा में जहाँ प्रतिदिन हजारों मरीजों का उपचार और लाखों लोगों को सेवा मिल रही है। और जब एक विरासत समय के साथ वो केवल परंपरा नहीं भविष्य का आधार बनती है। इसी सोच के साथ 2024 में स्थापित हुआ महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI जैसे भविष्य की तकनीकी शिक्षा दी जा रही है। और जब तकनीकी शिक्षा तकनीकी क्रांति से जुड़ती है तभी जरूरत है एक ऐसे मंच का जो भविष्य को आकार देता है। ये मंच है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा TCS फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित एक परिवर्तनकारी पहल। ये केवल सहयोग नहीं बल्कि उस परंपरा का विस्तार है जिसे टाटा समूह ने दशकों से राष्ट्र निर्माण में निभाया है। यहाँ एक संपूर्ण टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है जहाँ शिक्षा, उद्योग,
सरकार और समाज एक साथ मिलकर भविष्य का निर्माण करते हैं। एआई फैक्ट्री मॉडल के माध्यम से लक्ष्य है लाखों छात्रों को जोड़ना, सैकड़ों एआई एप्लीकेशंस विकसित करना और अनेक स्टार्टअप्स को जन्म देना। इस विजन को साकार करने के लिए यहाँ स्थापित की गई है विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब में DGX H200 जैसी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध है। साइबर सिक्योरिटी लैब में छात्र रियल वर्ल्ड थ्रेट से निपटना सीखते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी लैब्स के माध्यम से छात्र केवल सीखते नहीं बल्कि निर्माण करते हैं, प्रयोग करते हैं और नवाचार करते हैं। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केवल प्रशिक्षण का केंद्र नहीं है, ये एक आंदोलन है जो तैयार कर रहा है ऐसे युवा जो केवल नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि समाधान बनाने वाले होंगे। आज ये पहल पूर्वांचल के 17 जिलों के लिए एक तकनीकी शक्ति केंद्र के रूप में उभर रही है, जो योगदान देगी उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में। शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा सबके लिए ये केवल एक नारा नहीं, ये एक संकल्प है। भविष्य उसे वही रचते हैं जो सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं। आइए इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर एक नए, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। Welcome once. This 5 day online technology training program aims to introduce participants to additive manufacturing, CAD, design thinking, innovation, entrepreneurship, and startup ecosystem. The program has been designed not only for engineering learners but also for school students, diploma students, researchers, faculty members, and professionals with the vision of promoting inclusive and interdisciplinary technology education. Established in 1956 under the guidance and blessings of Rashtrasant Brahmali Mahant Digvijayanath Ji Maharaj, Maharana Pratap Polytechnic College, Gorakhpur is today a government-aided institution running under the Uttar Pradesh Board of Technical Education and approved by AICTE, Government of India. Beginning its journey with civil engineering during 1956 to 1957, the institution has contributed significantly towards developing engineers and technocrats across diverse domains through quality technical education, strong infrastructure, and student development initiatives. At the outset, it's my privilege to respectfully invite the principal of Maharana Pratap Polytechnic College, Dr. Anil Prakash Singh Ji, for his opening statement, wishes, and blessing. Sir, please. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. Very good morning, esteemed guests, distinguished speakers, facilitators, and dear participants. It is an absolute privilege to stand before you and warmly welcome you to this 5 day online technology training program on the topic Introduction to Additive Manufacturing. Additive manufacturing is just the concept to build the digital idea into physical object. Such training program on emerging technologies helping us a lot of our beginners and learners to add new dimensions in our skill. Such training program also provides and gives us to exchange our ideas among the technocrats to implement our thinkings, our ideas, and to share our views in front of uh, advanced technologies. In these 5 days, I hope you will, dear participants, you will face a lot of speakers from different institutes.
I advise to all, don't hesitate to ask questions to that experts. हमेशा हमें ये कोशिश करिए आप लोग के कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप कुछ सीखने आए हैं तो जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे अपने क्वेश्चन शेयर करें, अपने जो भी माइंड में जो आइडिया आ रहा है, always try to ask, because whenever you will ask the questions from the teachers and from the experts, they will also having some problem, they will also having some idea, they will share and help to resolve these issues, and sometimes issues, new issues you will face. So they all can share their ideas and try to resolve this. Before starting 5 days journey of learning in this program, I would like to share. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, okay. I would like to share my few words about three-dimensional printing. In three-dimensional printing, 4 5 years back, I was teaching three-dimensional printing to some first-year students. I saw students were very keen to know about the what is the 3D printing, what is how it will work. So जितने भी नए आपके हमारे लर्नर्स हैं उन सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ 3D printing process, and some popular 3D printing process is FDM, like fuse deposition method, SLA stereolithography, SLS selective laser sintering. But all type of 3D printing process, there are 4 steps. That 4 steps always you keep in mind. मैं कुछ आपको एक थोड़ा सा छोटा सा टिप्स बताऊंगा जिससे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे. आप सिंपल याद रखिए, डीएसपी. DSP is not for Deputy Superintendent of Police. DSP, P means first D stands for design, S stands for slicing, P stands for printing, and last P stands for post processing. So during the 5 days, you will see different process. You will go through process of 3D printing. So first D is means design. Whatever component you are going to model, that can be converted in form of the solid models by help of some software. That is the design. Then slicing, that design whatever you have created through by help of softwares, that you have to just like a in form of the slice, means जैसे हम लोग खीरा काटते हैं, जैसे हम लोग सलाद काटते हैं एक स्लाइस में, उसी फॉर्म में हमने उस सॉलिड मॉडल को कन्वर्ट कर दिया इन फॉर्म ऑफ स्लाइस. Then that slice is to be prepared by help of some machine. So printing process. Next process is post processing. After making physical object through printing slice by slice, or you have to finish the project. सरफेस फिनिश है उसका, या फिर आप अगर चाहें तो उसके बहुत सारे सपोर्ट्स होते हैं, उनको रिमूव करना. दैट इज द प्रोसेस ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग. सो you can memorize, you can remember the things by help of DSP. And without taking more time of your before starting the sessions, I wish you all a highly fruitful and inspiring week ahead. Thanks you. धन्यवाद सभी को. Most welcome to all. Thank you. Thank you, sir, Diksha. for your valuable words and encouragement. Innovation Hub Uttar Pradesh is a pioneer initiative established by Government of Uttar Pradesh to strengthen the startup and innovation ecosystem across the state through a hub and spoke model. Facilitated by Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Innovation Hub supports innovation, entrepreneurship, product development, commercialization, and technology-led growth by connecting students, innovators, academia, and industry. Center of Excellence MPIT Gorakhpur is glad to be associated with Innovation Hub Uttar Pradesh through a shared vision of collectively fostering innovation, entrepreneurship, product development, and self-sustainability for Eastern Uttar Pradesh. This training program is one of our first collaborative initiative under this partnership. It's our pleasure and privilege to have with us Chief Executive Officer of Innovation Hub Uttar Pradesh, Shri Mahip Singh Ji, for his opening remarks and wishes for this initiative. Over to you, sir.
Thank you, Madam Disha, and good morning, everyone. Am I audible? Just मैं ensure करना चाह रहा हूँ मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, गुड you are मॉर्निंग audible. सर, आपकी आवाज आ रही है. Okay. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर. Thank you. मोस्ट वेलकम सर. Professor Sudhir Agrawal, sir, Director, MPIT, and previous speaker, Maharana Pratap Polytechnic College Principal, Professor Anil Prakash Singh, sir. Darshan Srivastava ji, who has been instrumental for this entire program and this faculty development program, and COO of MPIT Incubation and Center of Excellence, Sachidanand ji, who has been connected with me from long time. कैसे हैं आप? And all the professors connected with us, and I'm sure that few students also would be there, few startups would be there. So thank you everyone, and thank you so much for inviting me, and I'm privileged to be the part of this impactful initiative by MPIT and by two young professors who are trying to make understand entire ecosystem what exactly additive manufacturing is and how it is going to be useful for the startups for this entire ecosystem. Because it is one of the transformative technology which has been used nowadays. Professor Anil Prakash Singh sir was telling about different type of 3D printings, different type of additive manufacturing. He has been in this particular area from long time, I believe. So now Industry 4.0, even Industry 5.0 also having a major component of additive manufacturing, and most of the startups are using this technology to make the prototype. Immediate prototype is being made using this technology. Earlier, we have been making such type of prototypes and such type of models by casting technology, by molding technology, which was subtracting technology, not additive manufacturing. But nowadays, we have reduced the loss, we have reduced the wastage of the material by adding layer by layer to make a useful product, which is called rapid prototyping, where we can customize the products according to our need. That's why it is said that it is very much useful for the startup prototyping point of view. Of course, it has reduced entire timeline of the product making, and also national strategy of additive manufacturing says that this type of manufacturing should be connected with the entrepreneurship and innovation. आप लोगों को पता होगा शायद एक गाइडलाइन है उनकी जिसमें वो बोलते हैं कि such type of additive manufacturing should be connected with the technology and should be connected with the innovation, because it will make a huge impact then only, right? So and adding one more vertical into this, which is design thinking, will certainly lead towards the making something very innovative. Design thinking means working on some project, some innovative project, bringing a lot of ideas to how to make that type of product, and then adding additive manufacturing into it would certainly lead towards making a good and innovative project which will further lead towards innovation, which will lead towards the entrepreneurship and a startup. And certainly very soon, by spreading such type of culture around you, you are going to make a good ecosystem where the startups can be grown in such type of environment, right? We are committed to help such type of people. We are committed to help such type of innovators who are working in this particular area. I just brief about the innovation hub, how exactly we are helping to entire state. So we have different labs, since additive manufacturing is the topic of today and design thinking is the topic of today. So I'll start from here only. We have a very good lab of additive manufacturing where we have all type of 3D printers, and this facility is available for entire state. Anyone who want to work in this particular area can come and join us by sending an email, or they can done with making up their projects and prototypes.
So this is one of the support extended by Innovation Hub. Apart from this, patent is another support where we are supporting the patent facility to everyone. अब चूंकि बात एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग की है, बात इनोवेशन की है, तो इनोवेशन के बाद हम अगले स्टेप पे जाएंगे तो पेटेंटिंग आईपीआर आता है. सो फॉर दैट पर्पस वी आर एक्सटेंडिंग द सपोर्ट ऑफ द पेटेंट आल्सो, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन. राइट. इसके बावजूद भी बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स हमारे किसी और प्लेटफॉर्म पे हम बताएंगे, सिंस दिस इज अ वेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म. सो I request everyone who has connected and who is going to avail the benefit of this 5 days faculty development program that try to solve the local problem. The best way to work for any innovation is try to solve the local problem. And we are privileged to have that. We are in an era of developing state, developing country, where a lot of problems are around us. We have to have just that type of sight to observe the problem, and definitely solution would come automatically. And every problem is having number of solutions. So you should have that type of sight to identify the problems, right? And again, try to solve the local problems, try to solve the rural problems, because MPIT is also from the Gorakhpur, which is Purvanchal region, and we believe that most of the innovations are coming from that area only. हमारे पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं उस एरिया से. Lot of fantastic innovations they are having. So try to solve the rural problem, try to solve the agriculture problem, because UP is being represented with 1 lakh of the villages, and agriculture is having a lot of potential to work with, right? Healthcare, drone, automation. अभी हमने एक वर्कशॉप करवाई थी where we use a 3D printer to make the drones. बहुत कॉमन है, हर जगह यूज हो रहा है. And I have seen that MPIT is also extending the training programs in the drone, right? Yes, So sir. drone is the most common area where additive manufacturing is being used, right? So my request to everyone would be that don't avail this platform to get the certificate only, but try to make something innovative. Try to understand about how does 3D printers work, what are the different technologies, how the axis is moving, how the FDM is being molded to make the additive manufacturing, how the layers are being added upon each other, how the microcontroller is working. I'm sure that this type of information would be given in between. So ये technological parts हैं where you can have a lot of innovations. आप 3D printing में भी बहुत सारे innovations कर सकते हैं. And every day we are observing that different companies are coming up with different innovations in additive manufacturing area. So why can't you, right? So think about these things and always keep one angle, which is commercial angle. While doing any innovation, while having any thought in your mind, making a prototype, you should have that commercial vertical also, that how we will get the revenue out of it, which is called ultimately entrepreneurship. हम innovation society के काम के लिए कर ही रहे हैं, and every problem which we are solving is automatically helping the society and adding the GDP, right? So that commercial angle should always be there, right? Along with the IPR, patent, and startup angle, right? So with these words, I'll not take much time because I have been given just 5 minutes to tell about these areas. So I congratulate everyone, and I wish a very good and fruitful 5 days. And I'm sure that most of the faculty members, researchers, professors, and all the startups would come up with some new type of innovation, some new type of ideas. And you are going to be the brand ambassador of your institution by having the information about all these things. So I congratulate once again to every organizer, and I'm sure that बहुत मेहनत इन सब चीजों के पीछे लगती है, that we understand. और मैं फिर से एक बार congratulate करता हूँ सचिदानंद जी को and दर्शन श्रीवास्तव, and I must congratulate Professor Sudhir Agrawal sir for having his visionary leadership to give permission to organize such type of event at MPIT, right? So with these words, मैं अपने आप को wind up करता हूँ यहाँ पे. Thank you so much for inviting me again. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable guidance and support.
Maharana Thank Pratap you. Institute of Technology, Gorakhpur, one among the 57 institutions under Maharana Pratap Shiksha Parishad, founded by Param Pujya Mahant Digvijay Nath Ji Maharaj, is committed towards future-ready technical education. Established in 2024, approved by AICTE and affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, MPIT focuses on integrating core engineering education with emerging technologies, offering engineering degree programs in computer science, AIML, data science, IT, EE, VLSI, design and technology. Now, it is my esteemed pleasure to respectfully invite the Director, Maharana Pratap Institute of Technology, Professor Sudhir Agrawal sir, to kindly enlighten us with his blessing, wishes, and guidance. Sir, Thank you, Disha, uh, for giving me the opportunity to speak few words in front of the participants. So, respected speakers, uh, CEO of Innovation Hub, Mr. Darshan, CEO, Mr. Sachidan Chaturvedi, and all the participants. Good morning to all of you. Just I want to introduce this particular the information related to the course which is being held today. That is the introduction of the additive manufacturing, design thinking, and fundamentals about all these. It's a 5-day session which is being conducted by Center of Excellence. On the behalf of MPIT and the Center of Excellence, I welcome all of you in this particular workshop. The purpose of this particular workshop is to promote the awareness, skill orientation, exposes towards the emerging technologies. This program has been designed with the vision of making the technology we are able to learn the inclusively. You are going to be interdisciplinary, and the things will be accessible to the learners across the diverse educational backgrounds. Of course, it may be possible that most of the participants are not be able to even know the term additive manufacturing and the design thinking. But this particular program is going to introduce the additive manufacturing, the CAD design, the product development, the digital manufacturing, so that you are able to learn about these technologies and how these can be implemented in your day-to-day life, how it can be included in the innovation part, how you can think that the new things can be manufactured, or how the design can be changed of the existing elements so that it will be more fruitful and effective as far as the basic needs are concerned. Now, this program, we want to introduce the modern manufacturing evolution, which is related with the industry 4.0 and 4.5, 5.0. We also want that you are able to know the fundamental understanding of the additive manufacturing and the 3D printing technologies. You are, with this particular program, you are going to create the awareness about the CAD designs, product development flow, and the rapid prototype. It may be possible that these terms seems to be very difficult, but whenever you are going through the sessions, you will be able to learn a lot of things related to that. We also want to familiarize the participant with the emerging career opportunities and the future technology domain, because this is a introductory type of course where the fundamental will be fundamental about the additive manufacturing and the design thinking will be introduced in this 5-day session. But
I also invite all the participants to come to our center. We will decide the day. If you are available in Gorakhpur, please come to the center, and whatever you are learning in 2-3 day, 4 day, we will have a live session of the how this 3D printing machine used to work in the labs. So this will be an opportunity for all the participants to get a hands-on training on the 3D printing machines also. So with all these words, I again congratulate all the participants to be the part of this workshop, and I request the convener of this particular program to please go ahead with your sessions. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for inspiring words and encouragement. Now we are moving towards the session 1. Our first session focuses on recent trends in manufacturing industry. Mr. Darshan Srivastav, sir, I request you kindly proceed it. Sir, we are honored to have you. May I request you to kindly begin your session. Okay, so good morning, one and all present here. Good morning, Mahib sir, Director sir, Principal sir, COO of the Center of Excellence, Sachidanand Chaturvedi sir. So we are honored to have such dignitaries and luminaires of technology and innovation amongst us. And it is the first session of this 5-day program, started so wonderfully with thought-provoking and inspiring messages. We are honored and we are overwhelmed to hear from you, sir. Thank you so much for joining. Now, we will begin with the first technical session. So it would be a very brief session. I'm going to share my screen. I just want the convener to please acknowledge if the screen is shared. So thank you, Mahib sir. So your blessings Sachidanand, if you don't mind, I would take permission to quit from here because I have to join another meeting. right, sir, right. Thank you so much, sir. Thank you so Okay, much. so thank you so much. Thank you, sir. So I have just shared the screen. Is my screen visible to the audience, participants? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. You can proceed. Thank you, thank you, thank you. So as we are awaiting our keynote speaker, Dr. Dipesh Mishra, to join, I will keep this very brief. It is just an introductory and an awareness session of the recent trends in manufacturing industry. What this manufacturing thing is all about. What is the future of manufacturing business in India? These things are there. So this will be a very brief session and some instructions to the participants. I request you to take note of these sessions and proceedings, as these will be the information shared here will be very helpful to you to solve your quizzes and assessment tests, as you have already been informed regarding the certification criteria. The certification criteria is the participants need to be present in almost all the sessions. Maintaining 60% attendance is compulsory, and at the end of the day 5, the participants are supposed to perform well in an assessment test. Subject to scoring 40% marks in that test, the participants will be eligible for certificates. With all this information, let me start. So, recent trends in manufacturing industry. The objectives of this session would be to introduce participants about manufacturing and production systems, evolution of manufacturing technologies, then as already discussed and enlightened, industrial revolutions. What are these terms? Industry 4.0, Industry 5.0. So if there are terms like 4.0 and 5.0, what is the transformation? Was there something Industry 1.0? Then a detailed about Industry 4.0 ecosystem, smart manufacturing concepts, digital manufacturing and automation, and the role of additive manufacturing.
the additive manufacturing pitches in Industry 4.0. And as we embark upon this 4-day long journey, which will be detailed discussions upon AM technologies. Also, I invite the young enthusiasts from schools. We definitely, there are participants from schools who have just maybe 11th pass out or 12th pass out. So the sessions will be bilingual. I've also requested our keynote speakers to make this accessible for all, and as our vision is technology should be inclusive, तो ये दोनों भाषाओं में रहेगा और जरूरी बातें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। डिस्कशन फोरम है जिसमें चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, डाउट्स लिख सकते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेशन उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मैन्युफैक्चरिंग है क्या? मैन्युफैक्चरिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स into finished products using machinery, labor, tools and technological processes. हिंदी में अगर हम इसको कहें तो ये दो शब्द आ जाते हैं जिसे हम अक्सर मिसइंटरप्रेट करते हैं या एक जैसा बहुत यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग की हिंदी विनिर्माण है और प्रोडक्शन उत्पादन। यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना, प्रोडक्ट हम किन चीजों को कहते हैं? जो वस्तुएं उपयोगी हों उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं, जिनको प्रयोग में लाया जा सके, जिनका कोई अनुप्रयोग हो। आइटम्स विच कुड बी यूज्ड टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स और मे बी टू सर्व सम फंक्शन, दोज आर प्रोडक्ट्स। अब ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने का, डेवलप करने का, क्रिएट करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। इसमें जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल्स में देख सकते हैं, प्लास्टिक कप्स वगैरह हमें बनाने हो, पेपर ग्लासेस बनाने हो, बॉटल्स बनाने हो, तो एक हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। जैसे हमें प्लास्टिक बीड्स के फॉर्म में, छोटे छोटे प्लास्टिक बॉल्स के फॉर्म में रॉ इनपुट मटेरियल यूज किया जाएगा। फिर निश्चित रूप से किसी प्रक्रिया के द्वारा बाय द मीन्स ऑफ इस प्रोसेस में कुछ मशीन्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, कुछ टूल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, हो सकता है कोई फैक्ट्री की किसी सेटअप की जरूरत हो, या और सम ऑपरेटर्स वुड बी रिक्वायर्ड। तो इस एक प्रक्रिया के थ्रू इस रॉ मटेरियल पर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, वैल्यू एडिशन किया जाता है, इसके रूप स्वरूप को बदला जाता है और डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, डिजायर्ड पर्पस, डिजायर्ड फंक्शन के अनुरूप हम एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ये विनिर्माण है। यहाँ जो एग्जाम्पल हमने लिया, इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन मोल्डिंग कह सकते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो रॉ मटेरियल से यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने की प्रक्रिया को हम मैन्युफैक्चरिंग कह रहे हैं। इसमें जो सीरीज ऑफ प्रोसेसेस या एक्टिविटीज हैं, इनके बहुत सारे फंडामेंटल प्रोसेसेस के टर्म्स हैं, जैसे कास्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कास्टिंग था, ढलाई जिसको हम कहते हैं। जैसे मोल्टन मेटल को हमने मेल्ट किया किसी चैम्बर में, किसी मोल्ड में, सांचा जिसको हम कह सकते हैं, उसमें हमने उस लिक्विड को फिल किया और एक प्रक्रिया के द्वारा सॉलिडिफाइड पार्ट को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे एक मोल्टन मेटल को कोई शेप दिया जा सकता है और वो शेप, वो प्रोडक्ट यूजफुल है फॉर सम पर्पस। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण है और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। merely developing the useful product is not sufficient. वो यूजफुल प्रोडक्ट जो किसी प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया, उसका जो डेस्टिनेशन ऑफ पर्पस है, जहां वो इस्तेमाल किया जाना है, वहां तक रेडी टू यूज कंडीशन में पहुंचाना, ये एंड टारगेट हो गया हमारा। और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ, उसकी सप्लाई, उसकी लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना, प्लस रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने के बाद हमें जिन मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत है, जिस फैसिलिटी की जरूरत है जहां पर हम ये सारा काम करते हैं, फॉर एग्जांपल देयर मे बी सम फैक्ट्री, देयर मे बी सम वेयर हाउस, मटेरियल स्टोरेज इज रिक्वायर्ड, मटेरियल हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड। एक प्रोसेस के थ्रू जो वैल्यू एडिशन करके हमें प्रोडक्ट मिला, उसे हम चेक करें कि क्या ये हमारी फंक्शनैलिटी सर्व कर रहा है, क्या ये उस पर्पस को सॉल्व कर रहा है जिसकी नीड थी। तो क्वालिटी एश्योरेंस मॉनिटरिंग। सो
हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इज अ सबसेट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। इसमें पैकेजिंग, असेंबली, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम्स, अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स कम अंडर प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन टर्म की बात करते हैं तो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड कॉम्प्रिहेंसिवली। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, stock in hand, we can say stock in hand is inventory. For example, some raw material is required to be processed in order to make some product. हमने raw material number of parts एक दिन में जितने बना रहे हैं उसके हिसाब से हमने ऑर्डर किया, मे बी हम एक उससे ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं। तो ऑन द शॉप फ्लोर व्हाट इज नॉट करेंटली बीइंग यूज्ड दैट हैज टू बी मेंटेन्ड आल्सो। हम उसे प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं कि एक पाइपलाइन में जो रॉ मटेरियल्स हैं वो यूज हो रहे हैं, नेक्स्ट स्लॉट में हम दूसरे प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। तो जब हम स्टॉक को मेंटेन करते हैं दैट इज इन्वेंटरी। कई बार प्रोडक्शन लाइन में ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल एक मशीन पर कोई प्रोसेसिंग हुई और सेकंड मशीन रेडी है, जब पार्शियल प्रोसेसिंग मशीन ए पर हो जाएगी तो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू मशीन बी, एंड बिफोर मशीन ए सम सेमी फिनिश्ड पार्ट्स आर इन वेटिंग, देन दिस इज इन प्रोसेस इन्वेंटरी। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट मीन्स keeping the stock, maintaining the stock so that parts are always available in right quality and right quantity. There are number of such activities which is not directly related with the shop floor or factory, but it comes under production. So manufacturing, विनिर्माण उत्पादन का एक अंग है। प्रोडक्शन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे टारगेट्स क्या होते हैं एक ऐसी फैक्ट्री या ऐसे प्रोडक्शन सिस्टम से? पूरी फैसिलिटी से हम ये टारगेट करते हैं कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो, वॉट एवर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड पर डे पर आवर, हम मैक्सिमम आइटम्स, मैक्सिमम पार्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। द पार्ट्स विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, फॉर एग्जांपल वो कप, ग्लास, बॉटल्स का एग्जांपल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जैसा यूज केस है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट क्वालिटी, बेटर क्वालिटी में पार्ट्स क्रिएट हो। कॉस्ट, पार्ट्स की कॉस्ट, पार्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एट लोएस्ट कॉस्ट। जब हम कॉस्ट की बात कहते हैं तो एक्सपेंडिचर हमारा कहाँ कहाँ हो रहा है, रॉ मटेरियल्स के प्रोक्योरमेंट में पैसे लगते हैं, एक्सपेंडिचर होता है। मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम की फंक्शनिंग में कॉस्ट इंकर्ड होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। उन कंपोनेंट्स में हमें समझ में आएगा कि व्हाट आर द इनपुट थिंग्स, कॉस्ट कहाँ कहाँ इनकर होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आज के समय में सस्टेनेबिलिटी अप्रोच को रख के, ध्यान में रख के ये बहुत ड्राइव किया जा रहा है, इट इज रिड्यूस्ड वेस्ट। द पार्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रोडक्शन फैसिलिटी प्रोड्यूस्ड वेस्ट, मिनिमम वेस्टेज इज प्रोड्यूस्ड along with the parts or during the production process। ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टाइमलीनेस, फास्टर डिलीवरी, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम हो, जो पार्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड यूजर तक वो कम से कम समय में, ताकि रियल टाइम समय में उसको डिलीवर किया जा सके। तो प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, waste and time, these are some important verticals, these are objectives, and these objectives have driven the manufacturing industry from industrial revolution era. Components of production system, inputs, इसको कैटेगराइज हम कर सकते हैं कि क्या इनपुट्स लग रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस क्या है। इनपुट में जैसे रॉ मटेरियल है, एनर्जी इज इनपुट कंपोनेंट, लेबर, मैन पावर इज रिक्वायर्ड एज इनपुट, इंफॉर्मेशन, so okay, skill, knowledge, इंफॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे एक पार्ट हमें प्रोड्यूस करना है, हमने उसका एक ड्राइंग क्रिएट किया है, एक आइडिया क्रिएट किया है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, एक एस्टिमेशन, एक वर्क फ्लो चार्ट है। जिन पैटर्न को, जिन चीजों को, जिन इंस्ट्रक्शंस को हम मैनुअल्स को फॉलो करके काम करने जा रहे हैं, दैट कम्स अंडर इंफॉर्मेशन। बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। हम लोग आगे कमिंग डेज में लैब वॉक थ्रू सेशन वगैरह में ऐसे इंफॉर्मेशन और गाइडलाइन मैनुअल्स को भी डिस्कस करेंगे। एंड मशीन्स, तो दीज आर इनपुट कंपोनेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इनपुट कंपोनेंट्स हम रॉ मटेरियल का क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं स्टेजेस में इन ऑर्डर टू मेक दैट प्रोडक्ट।
So जैसा मैंने बताया कि there are several manufacturing processes. Machining process is there, casting is there, welding is there, forming is there, assembly is there. These are very few names. Machining is basically when we take some part and by use of machines and tools, we remove material from the part to give certain features and shapes. यानी material removal, पदार्थ उसमें काट के निकाला जा रहा है, टूल उसमें इंटरवीन कर रहा है सरफेस में. फॉर एग्जांपल, एक आयरन की रॉड दे दी जाए और उस पर थ्रेड्स क्रिएट करने हो तो हम एक टूल के द्वारा स्क्रू थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग, थ्रेडिंग करेंगे, उसमें से मटेरियल रिमूव करेंगे, सक्सेसिव ग्रूव्स बनाएंगे. कास्टिंग में हम मोल्टन मेटल को एक मोल्ड में डालते हैं और उस मोल्ड में एक क्यूरिंग प्रोसेस के द्वारा सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, तो सांचे में वो पिघला हुआ धातु पदार्थ सॉलिडिफाई हो जाता है और उस सांचे में से हम उस सॉलिडिफाइड पार्ट को निकाल करके उसको एज अ प्रोडक्ट यूज करते हैं. वेल्डिंग हम सभी कहीं ना कहीं देख रहे हैं. वेल्डिंग इज जॉइनिंग प्रोसेस. जॉइनिंग में हम हीट का इस्तेमाल करके, समटाइम्स प्रेशर का इस्तेमाल करके दो पार्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक वन कंप्लीट वन प्रोडक्ट. वेल्डिंग हम जॉइनिंग में हम वेल्डिंग के अलावा स्क्रू बोल्ट का यूज कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें हैं. ये इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू. फॉर्मिंग प्रोसेस. So forming is another traditional manufacturing process. Forming means changing the shape of the raw material to make some part. जैसे एक हम आयरन की रॉड या ब्रिक, आयरन का ब्रिक हो, उसको रोलर्स के बीच में अगर इंसर्ट किया जाए और रोलर्स के प्रेशर, कंप्रेशन और शियर की वजह से वो आयरन ब्रिक शीट्स में कन्वर्ट होकर दूसरे साइड से निकल रहा हो, तो उसका शेप चेंज हो गया बाय द एप्लीकेशन ऑफ pressure. Sometimes this can be done by heating or without heating also. So there is cold forming, hot forming. Many examples are there. Rolling, extrusion, wire drawing. So extrusion is heating a part. एक पार्ट को हीट किया जाए और एक मोल्ड के थ्रू उसको प्रेशराइज तरीके से फोर्स किया जाए ताकि मोल्ड का जो नोजल है, डाई का जो नोजल है, वहां जो शेप दिया गया है वहां से वो मोल्टन पार्ट निकलता है और उसकी शेप अटेन कर लेता है. Assembly means we have created different parts, यानी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके पार्ट 1 बनाया गया, रॉ मटेरियल डिफरेंट रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके पार्ट 2, पार्ट 3, and the final product is assembly of part 1, part 2 and part 3. Most of the production components are being requiring this assembly. हम ऑटोमोबाइल में देखें या डिफरेंट पार्ट्स जो यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हमारे बन रहे हैं, vehicles are there, outputs are shown. Vehicle is result of assembly. Different components of the vehicle is manufactured in different factories by one of these transformation processes. The final products are collected and assembled at some assembly units and one complete vehicle is prepared. Similarly, we can see mobile phones. So the chips are the IC parts are manufactured in some different factory. The screen is being manufactured in some different factory. इन components का manufacturing process अलग-अलग है और ये बाद में assemble हो रहा है. Medical devices, consumer goods. So these are all components of the production system. Fourth one is feedback system. Now production system, feedback system is the pillar of any production facility because the producer needs to know the chances of improvement, areas of improvement, areas of modification, where they can do better and where there is need of R&D, research कहाँ करें areas को better करने के लिए, क्योंकि हमारी needs evolve हो रही है, हमारी needs customize हो रही है, change हो रही है. और there may be something हम हमेशा देखते हैं कि जैसे आप earphones का example लें, पहले हमारी need थी कि हम earphones, बस फोन का एक साउंड ऐसा है जो कोई ऑडियो हमने प्ले किया, वीडियो प्ले किया, जो सिर्फ मुझे सुनाई दे, सराउंडिंग में उसका नॉइज ना जाए. तो that need was fulfilled by wired earphones. Now there a need evolved कि अब we need wireless, हमें wireless की जरूरत है. टेक्नोलॉजी, R&D all came into the picture और समय के साथ कालांतर में हमें वायरलेस ईयरफोन्स देखने को मिले. अब जब एक बार वायरलेस ईयरफोन्स आ गए हैं तो हमें चाहिए कि maybe some buttons are there on the ear element, वहीं पे बटन हो, मोबाइल पॉकेट में पड़ा रहे, मोबाइल भी नहीं निकालना है. So needs are evolving. Customer feedback system is very much important
to cope up with the evolving trends in manufacturing sector. Also, it also paves way for addressing grievances and replacements. So feedback system is an important component, and control system. Control system is another important pillar of this production system. Control means how to ensure that the processes are being followed as per the standard operating procedure. जो standards है वैसे ही processes follow हों. हमने input raw material लिया और series of processes उस पर perform करना शुरू किया, फिर हम quality check कर रहे हैं और product launch कर रहे हैं. ऐसे में इनिशियल स्टेज से ही हमें मॉनिटरिंग करने की जरूरत होती है. जितना लेट से हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम, उतना हमारा एफर्ट वेस्ट हो जाता है. पीछे के सारे स्टेजेस का किया गया एफर्ट वेस्ट होता है. सो प्रोडक्शन प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. वी हैव टू वेरी प्रोमिनेंटली प्लान द प्रोडक्शन प्रोसेस. क्या क्या एक्टिविटीज होनी है, विच पार्ट हैज टू गो ऑन व्हाट मशीन, देयर शुड बी अ जॉब मशीन schedule, there should be a production workflow. Everything has to be planned. Quality has to be monitored, not only after the production but during the production, during each stage of the production, and control of the performance parameters. All these components of the production system work in coordination in order to ensure that the right part, the part that was needed to serve the product, is produced in the factory and it is delivered at right time in right quantity without delay, with less cost and less energy consumption. I hope this picture of components of production system, the integration of production workflow is somewhat clear. हम किसी फैसिलिटी में, किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, किसी फैक्ट्री में, किसी प्रोडक्ट के बिजनेस पे हम इस पिक्चर को इम्प्लीमेंट करके ये वर्कफ्लो समझ सकते हैं. How the manufacturing evolved over periods. इनिशियली हम देखते थे कि क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होती थी. एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन है, एक डायग्राम आपको कारपेंट्री का दिखाया गया है. रॉ मटेरियल पर वो कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके कुछ पार्ट्स बना रहा है. फीचर्स क्या है कि मैन हैज टू वर्क, सो मैन स्किल इज द गवर्निंग पैरामीटर. तो प्रोडक्शन वॉल्यूम इज लेस. एक आदमी जितना काम कर सकता है उस हिसाब से उसके रेट से प्रोडक्ट्स बनेंगे. पर्सन की जितनी स्किल है उतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो तैयार कर सकता है. अगर उसकी स्किल जिस एरिया में नहीं है, दैट प्रोडक्ट ही कैन नॉट मेक. सो बट यस, ही कैन कस्टमाइज. फॉर एग्जांपल, अ टेलर वर्क्स टू प्रिपेयर योर क्लोथ्स. कस्टमाइजेशन मीन्स प्रोडक्ट स्पेसिफिक टू द नीड ऑफ द कस्टमर. मेरे requirements, size, waist size, length of the trouser, my needs, the style I need in my trouser, that can differ from your need. So a tailor can prepare these customized clothes which are acceptable for different interests of customers. So this is customization. Craft manufacturing mein customization component was there. Mass production. What is mass production? When we have already decided that a facility, एक dedicated facility, एक factory, एक assembly line, जो एक similar type of product या एक ही तरह का product बनाएगी without variation, but the quantity of the part should be in lots. So this was the idea behind mass production. Since a number of products are being produced at the same time, so cost is less in mass production. Then we evolved into automation era. So use of technology was incorporated. Computers and electronics, sensor technology came into the pictures, and this area was evolved by the advent of computer numeric control machines, the CNC machines. And this was supported by another transformation in electronics industry known as PLC controllers, the programmable logic controllers, industrial robots, automation. So the level of automation increased, and this is the era we are witnessing. This is automation era. More specifically, we are witnessing digital manufacturing era. This course is all about digital manufacturing. So digital manufacturing क्या है?
अभी हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे कैसे हुआ और किन टेक्नोलॉजीज को हम इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज कहते हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज में जैसे सेंसर्स टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, डेटा रिवॉल्यूशन, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, नेटवर्क्स, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिजनेस के लिए किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किया जाए, और एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जहां पार्ट्स की प्लानिंग, डिज़ाइन, ड्राफ्टिंग, एक आइडिया से हम कंप्यूटर को कनेक्ट करना शुरू कर दें, एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, एडवांस टेक्नोलॉजीज आर utilized in every stage of the production, whether it be planning, whether it be drawing, designing, modeling, whether it be simulation, whether it is performing the activities on machine. So that can be assisted with the help of computers. And this is the objective of this orientation program, 5-day program, कि हम इन टेक्नोलॉजी एरियाज में व्हाट आर द इमर्जिंग एरियाज, ये कौन सी फ्यूचर टेक्नोलॉजी एरियाज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ड्राइव करेंगे. नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स ऑफ आवर लाइफ, what is left, agriculture, medicine, manufacturing, logistics, nothing is left with the advent of industry 4.0. so that हम इससे इंट्रोड्यूस हों तो the young learners, the young enthusiasts can decide their career pathway. Moving on to the industrial revolution, 1780s में we witnessed advent of industry, advent of mechanization, when Sir James Watt invented the steam engine. The world first time came to know about the power of steam. The energy source was coal. So steam power का इस्तेमाल करके मैकेनाइजेशन हुआ. स्टीम के प्रेशर से लिंक्स को, पार्ट्स को मूव किया जा सकता था, और इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स, एप्लीकेशंस देखने को मिले, मोस्टली टेक्सटाइल मिल्स. ये जो टेक्सटाइल क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हुआ करते थे, इसमें हम मैकेनाइज्ड लिंक्स का इस्तेमाल करना शुरू किए. ये लिंक्स वर ड्रिवन बाय स्टीम प्रेशर. सो machines replaced manual labor to some extent. That was the first industrial revolution. In around 100 years, there was advent of electricity thanks to such addition. So with the power, electric power, assembly lines, basically steam power was utilized to rotate a turbine and electricity was produced. That electricity can be, electricity we know very well, it can be used to govern some motors. So mechanical effort now can be replaced with the help of this electrical power, and this was more scalable model of replacing mechanical effort. Steam engine का, steam का power उतना scalable नहीं है. हर सिनेरियो में उससे रिलेटेड हम इम्प्लीमेंटेशन करके मैनुअल लेबर को कम नहीं कर सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर का इस्तेमाल करके मैकेनाइजेशन सर्ज्ड इंक्रीजिंगली. सो असेंबली लाइन प्रोडक्शन was the major example of this second industrial revolution known as Industry 2.0. Then with the advent of computers, so the electronics and computers came into the picture by 1970s. Energy source obviously was electricity, but automation was enabled. Industrial robots came into picture. Robotics was leading the industry and started to lead the industry. CNC machines, the computer numeric control machines, basically computer numeric control machines are some जो traditional machines होती हैं, if there is a mechanism by which computers can control the activities of machine. So we can say it is semi-automated. Man is needed, a person, a worker is needed to implement some programs in the CNC machines and also to monitor some activities as per the program. Today, these CNC machines are way more smarter, but originally the CNC machines, the core CNC concept, that may be considered as semi-automated system.
Again, the efficiency and reliability increased. The fourth industrial revolution, which is talk of the town today, Industry 4.0, also known as Industry 4.0. So herein we talk about a bunch of modern state-of-the-art technologies. In one word, all these technologies connected collectively, it can be called as cyber physical systems. So what technologies we are talking about? We'll see in coming slides. These technologies are Internet of Things, sensor technology. See, we already had computer in Industry 3.0, but Internet and the technology of connected devices through Internet. So this is Internet of Things, sensor technology, robotics, cloud computing, big data, 3D printing, and much more. By the advent of these technologies in variety of applications, say whether it be agriculture, medicine, logistics, and manufacturing, these technologies have the capability to transform almost all the sectors of our life. हम देखते हैं कि कृषि में किस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, IoT का इस्तेमाल करके, अलार्म बेस्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल करके हम रेन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्कूल्स में बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हम खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। कैमरा टेक्नोलॉजी, कैमरा सेंसर बेस्ड कैमरास का इस्तेमाल करके हम सर्विलेंस कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। रियल टाइम क्रॉप ग्रोथ मॉनिटरिंग एक टेक्निकल इमर्जिंग एरिया है एग्रीकल्चर में, कि एक फसल की जो ग्रोथ है उसका हमें रियल टाइम एनालिसिस हो रहा है कि हम अगर सिर्फ देखते हैं तो हमें ग्रोथ का बहुत अंदाजा नहीं लगता है पौधों में, बट बायोलॉजिकली उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, उसके लीव्स के कलर पैटर्न को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए और AI बेस्ड एल्गोरिदम से उसको कुछ रिजल्ट्स निकाले जाएं, तो क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करना है? दीज थिंग्स आर इन बज़वर्ड, और many of the school students and engineering students are working on these projects. So using these technologies in day-to-day lives in different areas, हम बहुत सारी चीजें आजकल देख रहे हैं। कोविड पीरियड में हमने विटनेस किया ऐसा कि when there were a number of cases every day, so some researchers worked upon making AI algorithms chest के x-ray samples को लेकर के, x-ray patterns को लेकर के मॉडल करना कि whether there is some long-term illness or whether the patient is COVID positive or something like that, by using machine learning algorithms, clustering and classification things. So use of these technologies is transforming all the sectors. Now what is Industry 5.0, which is the future? टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा, और हम घूम फिर के वापस आ जाते हैं ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोचेस पे। The objectives under fifth industrial revolution is sustainability, resilience, personalization, and human well-being. With the emerging technological developments and evolutions, हम ह्यूमन सेंट्रिक फीचर्स को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे अप्रोचेस की ह्यूमन एंड मशीन शुड वर्क कोलैबोरेटली। ह्यूमन सेंट्रिक चैलेंजेस और सस्टेनेबल अप्रोचेस को ध्यान में रखना। इसमें सस्टेनेबल अप्रोचेस वी टॉक अबाउट 3 P's. These 3 P's stand for people, planet and profit. So इसको जनरलाइज किया जाए तो people mean human, we people, human being, planet means earth, and profit means economy. So our technological development approaches should be in such a way to bring about collaborative development of not only the technology, not only the product, not only the infrastructure, but also people. For example, a technical project is to be implemented somewhere, then it has also to be kept in mind what is the culture prevailing there. The technology should be acceptable to the culture, and not only acceptable, उसके अंदर ऐसी capabilities होनी चाहिए कि उस टेक्निकल प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से वहाँ का कल्चर और एनरिच हो, वहाँ के प्रिवेलिंग नॉर्म्स, ट्रेडिशंस
बहुत alter ना हो. This is the people factor. The planet factor, obviously we know things, technological developments and implementations should be eco-friendly, environment-friendly. We have several challenges of pollution, emissions, climate change, glacier melting, desertification, number of troubles we are witnessing day by day. Microplastics have entered our environment, and by the means of rains, we are impacted. So this is the planet factor and profit factor, economy. So as we are developing economy and we aspire to be a developed nation by 2047, all our technological advancements are targeted to achieve this development target as soon as possible. So this was all about the picture of this industrial revolution. I think I'm okay. It's 11:10. Another 2 minutes, 2 to 3 minutes. So as we are about to hear from our keynote speaker, smart manufacturing. Coming back to manufacturing. So smart manufacturing, what are the key characteristics? Manufacturing के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज आर देयर, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम इज देयर, अ प्रोडक्शन फैसिलिटी इज देयर. हम इसमें कुछ चीज़ों को और इंक्लूड करें, जैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग. एक पार्ट पर जो काम हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, डिफरेंट हर एक्टिविटी को क्लोजली मॉनिटर करना बाय द मीन्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, अगेन बाय द मीन्स ऑफ AI, machine learning algorithms. We have different platforms. So this is real time monitoring. Predictive maintenance. For example, there is some operating parameter, some part is functioning and some vibration indicates abrupt performance. अगर कोई मशीन में फंक्शन हो रहा है और उसमें कोई अननेसेसरी वाइब्रेशन या नॉइज प्रोड्यूस होने लगे, तो वो नॉइज हमें बताता है कि देयर इज सम एब्रप्ट, कोई कुछ गलत, कुछ गड़बड़ हो रहा है और इसके आगे कोई फेल्योर हो सकता है, और ऐसा फेल्योर वो मशीन के लिए ब्रेकडाउन का कारण बन सकता है. 1 मिनट का ब्रेकडाउन हमारे पूरे प्रोडक्शन फैसिलिटी में लंबा डिले कर सकता है. तो इट वुड रिजल्ट इनटू अ कॉस्ट, अनप्रोडक्टिव कॉस्ट. ब्रेकडाउन हैजार्डस हो सकता है, ब्रेकडाउन लॉन्ग टर्म डिसरप्शन कर सकता है कोई. तो हमें ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स को, अलार्म्स को मॉनिटर करते रहने की जरूरत होती है. प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मशीन परफॉर्मेंस ट्रेंड्स का एनालिसिस करके, AI एल्गोरिदम्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स इसके लिए, डेटा एनालिटिक्स है हमारे पास, जिसके सहायता से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ब्रेक इवन टाइम क्या है जब तक मशीन विल परफॉर्म इन द बेस्ट कंडीशन, एंड बाय व्हाट टाइम this vibration or these indicative parameters will severe, so that we could prepare before the actual breakdown occurs. Autonomous systems, again, so there is a requirement of material handling in warehouse, in factories, in packaging units, in assembly lines. So why not use some autonomous devices like robots, some automated guided vehicles, rail guided vehicles have been used. So these are some autonomous material handling devices, some examples of these autonomous systems. Also we have automatic storage and retrieval system. एक shelf, you can imagine a shelf. उस shelf पे storage के लिए parts रखे गए हैं, and there are, suppose bottom to top there is shelf number 1, 2, 3, 4, और by the need, as per the need, these shelves में shuffle, ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो left right हो सकते हैं in that carousel. So this is known as automated storage and retrieval system. This is again an autonomous system. Human machine collaboration, as we discussed. So man and machine may work together. These are some of the facilities which we this human machine collaboration, our 3D printers established by Philips Machine Tools in this lab. We work like human machine collaboration environment. So some commands have to be given by the user and machine performs. Then again, user may or may not check. The machine will prepare the part, then user is required to remove. So these we can say it as a cobot environment, collaborative robots. This enhances safety,
This improves worker productivity, better ergonomics, and much more of job satisfaction. This is the detailed Industry 4.0 ecosystem. I request our participants and students, you may take a screenshot of this picture. It contains a number of keywords. There are represented core technology areas and a description of these technology areas. We are running. I want you to go through this example of these technology areas. हम day to day life में इन examples को, for example, big data analytics इसका क्या इस्तेमाल है, आप online courses वगैरह, या you must have seen some learning management systems जहाँ पर आपने 2 दिन क्लास की, तीसरे दिन नहीं की, तो आपको पॉपअप्स आते हैं about. These are examples. तो प्रोडक्शन डेटा एनालिटिक्स इसको हम कह सकते हैं. इन सभी टेक्नोलॉजी एरियाज के एप्लीकेशंस एंड इम्पैक्ट्स लिखे हैं. आप इसको जरूर पढ़ें और समझें, और अपने ये चैट बॉक्स में आप क्वेश्चंस डालते रहें. डेफिनेटली वी विल बी स्टे इन टच. सो digital manufacturing. Our journey of this 5-day program revolves around this slide. Digital manufacturing means integrating digital tools with production system for a smarter, faster and better manufacturing. Production system, product manufacture करना, हमें products बनाना है inside a factory or inside some room. Now today we are having this concept of factory under one roof, एक छत के नीचे सब कुछ. तो इसमें क्या है कि हम parts को, जो part आपको produce करना है, you have to design it. So we have computers which will assist. This is known as computer aided designing. In coming sessions we will have detailed discussions upon these technologies. These designs can be modeled and simulated. We will come to know what is simulation in coming sessions. Simulation means subjecting the model to the virtual environment. ऐसा environment जहाँ पर वो use हो रहा हो वो part, और हम उसके analysis करें, strength analysis या performance analysis by virtual testing. Actually it is not into use. एक चेयर मैंने डिजाइन किया और उस चेयर पर बैठ के देखें कि इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, कहाँ से फेलियर के चांसेस हैं, दैट इज प्रैक्टिकल टेस्टिंग. लेकिन उसी चेयर का मॉडल बना करके सिमुलेट कर लिया जाए और हम सब्जेक्ट कर दें फोर्सेस उस पर, उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में. और सो दिस इज कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन. देन प्रोसेस प्लानिंग इज देयर, computer aided manufacturing is there, 3D printer is one example. Production and automation, quality and data management, and continuous improvement, feedback loop, process optimization, product improvements. This is all about the recent trends in the manufacturing industry. Today manufacturing is not just a process, it is a transformation which is a result of modern technologies like artificial intelligence, industrial internet of things, digital twin, robotics and automation, additive manufacturing analysis, cloud manufacturing, sustainable manufacturing, 5G enabled manufacturing, cyber security, AR and VR, all confluenced together on the same page to bring excellent products with customized needs, with highest possible quality, targeted to be produced with minimal waste in lowest cost and lowest energy. Additive manufacturing पे हम detailed session we are awaiting our speaker. So I would like to end up with this slide on manufacturing trends in India. Our goals by 2047 to develop ourselves as a Viksit Bharat. Today, manufacturing sector is contributing around 15 to 16% of India's GDP. हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 15 से 16% अनुपात ये योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है. और 2047 तक जो हमारा गोल है डेवलप्ड नेशन होने का, विकसित भारत का, हम चाहते हैं इस 15-16% कंट्रीब्यूशन को 25% ऑफ जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग से आए. So this is going to 25% of GDP means 1/4 of our GDP. So manufacturing sector has been given a humongous responsibility. Young engineers, scientists, people like me, people like you watching this
participating in this session. We have this impending responsibility upon us. So government is driving number of initiatives like Make in India, production linked incentive schemes, Samarth Udyog Bharat 4.0. It is basically an initiative dedicated for Industry 4.0. It means smart, advanced manufacturing and rapid transformation hub, Samarth Udyog. Digital manufacturing initiatives like digital twins, cloud manufacturing, additive manufacturing. We have national strategy for additive manufacturing. What this strategy is about, I think it is a session on day 3 in this program, which is dedicated upon this national strategy on additive manufacturing. What government of India has planned and what are the proposals, what are career prospects, where we can pitch in, what schemes and what platforms we can utilize, not only to groom our career, but also to contribute in this Viksit Bharat vision under Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. So MSME digitization initiatives like Udyam, Digital MSME, Udyog Bandhu, number of initiatives are there which we need to explore, and a detailed session upon this manufacturing trends in India, it can be planned with experts and resource persons from industries and maybe Chamber of Commerce. So now this again a very important slide, a picture, which I would request our participants to please take a screenshot of this. What is there for you? Manufacturing engineers, CAD design and product development engineers, automation engineers, robotics, data analytics, AI in manufacturing. See, none of इसमें जितनी भी career opportunities या career pathways लिखे हैं, you cannot earn any of this by pursuing an engineering degree in one specialization or a diploma degree, a diploma, a polytechnic course, or a BSc course. These are just graduations. What is the need? The need today is upskilling. The need is interdisciplinary learning approach, a combination of knowledge of mechanical, electronics, data science, AI, especially in these emerging areas of technology, the Industry 4.0 technology areas. We need to learn and embrace these technologies. We need to upskill. आपको जब समय मिले अपने courses में, अपने classroom programs में, अपने school में, short term programs, skill development programs, इस तरह के online programs, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे skills develop करते रहें by collaborating, by connecting with centers like this, by connecting with platforms and institutes. IITs are running continuously online programs. Center of Excellence has offered certain courses and programs, and this would continue in throughout the year. Different online, offline programs are there. Apart from, see, one specialization, one degree program cannot make you an engineer 4.0 for Industry 4.0, because illiterate of 21st century will not be those who don't know how to read and write. They will be those who don't know how to learn, unlearn, and relearn. So again, I welcome you, and that's all from my side. I think I have done enough with this recent trends in manufacturing, and I hope you enjoyed the session. You must have taken some notes and some screenshots, which would be useful for you in solving the quizzes and assessment test at the end of this day 5. So with this, I'll stop sharing. Thank you so much for being such a wonderful and audience. So Thank you, sir, for the insightful session. thank you, ma'am. Thank you. Dear participant, we will resume the second session of the online program after a short break of 2 to 3 minutes. All participants are kindly requested to remain connected and rejoin promptly for the smooth continuation of the session. Thank you.
Welcome again. Our session 2 focuses on Introduction to Additive Manufacturing. Dr. Dipesh Mishra is a highly respected academician, innovative researcher, and an emerging name in the field of advanced manufacturing and engineering research. As an assistant professor at Madan Mohan Malviya University of Technology, he has consistently demonstrated excellence in teaching, technical innovation, and student mentorship. His remarkable contribution in additive manufacturing, biomaterials, and AI-based industrial application reflect his deep technical expertise and visionary approach towards modern engineering. With impactful research publication, patented innovation, and a passion for nurturing future engineers, he stands as an inspiration for students and young researchers alike, bringing pride to the academic and research community. Sir, it's our privilege to have you. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you for your introduction. Shall I start the presentation? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Please. Audible to everyone? Yes, sir. Your screen is visible and your voice is perfectly audible, sir. Okay. The topic is Introduction to Additive Manufacturing. Many of knows the name additive manufacturing is a 3D printing. And in this topic, we are going to cover these are the list of contents. We're going to explain one by one. The first one topic is what is additive manufacturing and how additive manufacturing is different from conventional manufacturing, major additive manufacturing technologies, industrial application of 3D printing, material used in additive manufacturing, market trend and future scope, and job opportunity and startup opportunity in 3D printing. Before going to the main topic, I just want to ask one question from the audience. Suppose NASA needs a lightweight rocket component with internal cooling channels. आपको पता होना चाहिए कि NASA rockets बनाता है, और for the manufacturing of rockets they require some internal cooling channels because वहाँ temperature बहुत ही drastically increase होता है. For this purpose, you need to inbuild some kind of internal cooling channels. Can conventional manufacturing manufacture this lightweight rocket? You can see the example of the lightweight rocket component here. There is how the complex creature are, how the internal channels are available in them. You are able to see this. These are internal cooling channels in the outside body of the. So the answer is this kind of structure, this kind of creature, this type of architecture will not possible in the conventional manufacturing. Why? Because it is very complex in shape. It is very difficult to manufacture. It is very difficult or impossible to manufacture with the conventional manufacturing. Conventional manufacturing means machining, milling, draining, forging, rolling. These are the conventional manufacturing. Another one is if you do the manufacturing, the high chance of material wastage, because in the form of chips, material wastage, junks, and requires long manufacturing time. Then how we make this item? How we make this body? The answer will come in the form of additive manufacturing. Additive manufacturing basically the term which solves the many such problems by building the component layer by layer directly from the CAD data. You know the CAD data. CAD data, nothing but is a computer design model which are going to be manufactured with the help of some designing software like AutoCAD, SolidWorks, Pro-E, CATIA. These are the CAD manufacturing platform. Then in simple words, we can explain the additive manufacturing is a process of joining materials layer upon layer directly from the 3D digital model. 3D digital model, it means the model you have manufactured with the help of CAD data to manufacture components. Just like this, you can see this example. This is your FDM. This is your FDM. Here the material are deposited layer by layer in fashion. The materials are deposited layer by layer additions. Just like this is the filament are adding. Here the material are deposited. In figure 2, the material are deposited layer by layer. This is a way of manufacturing the components, and this process increase the advantage to manufacture any complex object, just like the internal cooling channels of NASA lightweight rockets.
yeah, another complex gears, another turbine blades. Then how additive manufacturing different from the other conventional manufacturing? The first, basically the fabrication process divided into three pillars. The first one is subtractive, where the material are subtract from the parent body. The next one is additive, where the material added layer by layer. And the formative, where we apply some external force to deform or change the shape of the body, just like a forging, rolling, uh, uh, forging and rolling. These are different manufacturing process. We can see the difference, how additive are different from the subtractive and formative. Separate, here the material are subtract from the body, here the material are deformed by the application of external force. In simple words, if you see the example, difference between the additive and subtractive. In additive, the materials are added layer by layer. In subtracted, the material are subtracted from layer by layer from the fabricated body. Just these, you can see the example of the given picture. Next, we see the basic difference. The main advantage of additive manufacturing is no material wastage. There's no material wastage. The big advantage of additive manufacturing. But in case of subtracted, the materials are wasted in the form of chips, scraps, dissolves, iron, or vapors. Another advantage of additive manufacturing, complex shapes can be fabricated. Any complex shape in the world, any complex shape we can make with the help of additive, because here the CAD are integrated with the manufacturing. Here the CAD are integrated with the manufacturing, and the process of adding of layer is make any object, any complex object in easy way. In other words, in other subtractive, it is very difficult to fabricate the complex creature. Next, structures continue fully closed internal. If you want to make some hollow structures like pipe, अगर आपको pipe जैसा structure बनाना है, या hollow structure बनाना है, या hollow tubes बनाने हैं, तो वो आपको conventional से subtractive conventional manufacturing से बनाना बहुत मुश्किल होगा. बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है, हर चीज आपको मशीनिंग करना पड़ रहा है, हर चीज मटेरियल रिमूव करना पड़ रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या है, each and everything is regulated with the help of CAD model, and the materials are added layer by layer. The major we can see that the major disadvantages which are associated with the additive manufacturing, it requires time consuming process. One of the major disadvantage with the additive manufacturing is time consuming. It means ये मास प्रोडक्शन के लिए नहीं है. ये जो प्रोसेस है एडिटिव का, वो मास प्रोडक्शन के लिए नहीं है. ये केवल आपके क्वालिटेटिव प्रोडक्शन के लिए होता है. मतलब आपको एक प्रोडक्ट बनाएगा तो 24 घंटा लेगा, लेकिन क्वालिटेटिव होगा. मतलब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ सरफेस फिनिश, इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, फंक्शनलिटी, एफिशिएंसी, इट्स वेरी गुड. बट if you take an example of subtractive are basically used for the mass production. इकोनॉमिकली, जहां आपको इकोनॉमिकली चीप एंड बेस्ट, चीप और सस्ती चीजों को बनाना है, वी गो फॉर द सबट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग. By this way, we can easily understand what is the basic difference between the subtractive and additive. Additive में we can manufacture the product with the help of addition of layer, whereas in subtractive we can manufacture the product by subtracting the layer by layer. Next, there no material wastage. How there no material wastage? Because each layer are, because here the material are added, in the other hand the material are subtracted. Subtract होगा तो in the form of chips में जाएगा, scraps में जाएगा, dissolved irons में जाएगा. Complex shape we can easily manufacture. Here very difficult to make the complex shapes. Structure, just like hollow structure बनाना, कोई भी आपको hollow tubes बनाना, we can easily to make. And the main disadvantage which are associated with the additive manufacturing is the time consuming, because it requires, एक प्रोडक्ट बनाने में आपके करीब 24 घंटे लग सकते हैं, 48 आवर्स लग सकते हैं, लेकिन वो एक ही प्रोडक्ट बनाएगा. Depends on the what kind of process parameter you are using. Further, so by this way we have seen what is the principle of additive manufacturing. Principle of additive manufacturing basically depend on the layer by layer deposition of technique. In this way, there are 4 major steps are involved in the additive manufacturing. The 4 major steps. मैं यहाँ पे आपको एक simple CAD model से बताने का प्रयास कर रहा हूँ. I am going to explain with simple CAD model. Here we take the example of cylinder. यहाँ देख रहे हैं, here we take, I am taking the example of cylinder जिसका dimension 10 mm dia है, 15 mm height है. First of all, I have I have developed the CAD model with the help of designing software just like the SolidWorks, CATIA, ProE. कोई भी आप designing software use कर सकते हैं. With the help of this, we can fabricate or develop the CAD model. The second stage of the
additive manufacturing process is converting the CAD model in STL file. Why we convert the CAD model in STL file? Because STL file, STL is the full form of STL file is standard tessellation language. यहाँ पे अगर देख रहे होंगे आप, इसके सरफेस पे ट्रायंगुलर चीजें बनी हुई हैं, एक रेड कलर की आपकी चीजें बनी हुई हैं. These are the STL file format. Because ये STL फाइल होता है स्टैंडर्ड टेसलेशन लैंग्वेज. ये STL फाइल में क्यों कन्वर्ट करते हैं? बिकॉज STL फाइल इज द यूनिवर्सल फॉर्मेट फाइल. ये ऐसा यूनिवर्सल फाइल है जो हर सॉफ्टवेयर इसको एक्सेप्ट करता है. हर सॉफ्टवेयर इसको एक्सेप्ट करता है. कोई भी आप सॉफ्टवेयर उठा लीजिए, जब आप कैड उठा लीजिए, या फिर आप प्रोई उठा लीजिए, या आप कैटिया उठा लीजिए, कोई भी आप सॉफ्टवेयर उठा लीजिए, हर सॉफ्टवेयर में STL फाइल ये एक्सेप्ट होता है. Therefore, this format known as a de facto standard. De facto standard का मतलब होता है universally acceptable file. Suppose that आपको अगर ये फाइल आपको कहीं यूएस से भेजना है, तो अगर यूएस से भेजना है तो वो आपको आपसे STL फाइल मांगेगा. You just make the STL file because STL file is a universal format. वो कहीं भी ओपन हो जाएगा, किसी सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर लेता है, हर चीज को सपोर्ट कर लेता है. यही चीज आप दूसरा फॉर्मेट खोलेंगे तो पता चला वो उस फाइल को सपोर्ट नहीं करता. इफ यू टेक द वर्ड फाइल, वर्ड क्या होता है? वर्ड हर जगह एक्सेप्टेबल है, इसलिए वर्ड में हम करके उसको राइट करके भेज देते हैं, क्योंकि वो हर सिस्टम में, हर कंप्यूटर में एक्सेप्टेबल है. उसको इजी ओपन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. उसी तरह ये STL फाइल होता है. STL फाइल में बेसिकली वी कैन कन्वर्ट द CAD मॉडल इन STL फाइल. देन आफ्टर दिस STL फाइल स्लाइस्ड, मतलब जस्ट लाइक ए ब्रेड में देखते हैं वो स्लाइस होता है, उसी तरह मॉडल को हम स्लाइस कर देते हैं. व्हाई वी डू द स्लाइसिंग हियर? व्हाट इज द मेजर स्टेप ऑफ स्लाइसिंग? In slicing में we decide what kind of printing speed, what kind of infill density, what is the layer thickness of the given model. यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखें layer by layer slice होता है. Then after the slicing the CAD model, then we command the printer. जो आप देखते होंगे बटन दबाते हैं वो काम करने लगता है, वो ऐसा नहीं काम करता है. उसके पीछे 3 स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ता है, then start working. तो यही जो स्लाइसिंग होता है, स्लाइसिंग ही बेसिकली डिसाइड करता है क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके वर्किंग मॉडल की, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पार्ट्स की, जो पार्ट्स प्रिंट कर रहा है. तो ये 3-4 पैरामीटर, जो 4 मेजर स्टेप्स होते हैं आपके, ये होते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में. बाय दिस वे द प्रोसेस द प्रिंटर develop the product in the layer by layer division method. Further, as per the ASTM standard, the 3D printing, as we know that additive manufacturing is also known as the 3D printing. तो 3D printing को ये आपके बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. These are the classification of 3D printing. The first one is the material extrusion, fused, इसको हम FFF भी कहते हैं, FDM भी कहते हैं. Wet polymerization, powder bed fusion, material jetting, binder jetting, direct energy deposition, and powder bed fusion. So in which you start with the first material extrusion. What is a material extrusion? If you taking the example of FDM देखोगे आप, fused deposition molding, वहां पे क्या होता है? मटेरियल एक्सट्रूड करता है, मतलब एक नोजल से एक्सट्रूड करता है विद द हेल्प ऑफ heated nozzle. यहाँ देख सकते हैं मटेरियल इज एक्सट्रूडेड थ्रू a heated nozzle and deposited layer by layer. इसका मेजर एडवांटेज क्या होता है? इट्स लो कॉस्ट, इजी टू यूज, वाइड मटेरियल अवेलेबिलिटी. देयरफॉर द FDM मटेरियल, द FDM printer is available each and every college, बिकॉज इसकी वायबिलिटी इतनी हाई होती है, जिससे वजह से वहां पे मटेरियल भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, हर जगह ये यूज होता है. यहाँ छोड़िए आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, आउट ऑफ कंट्री में चले जाएं, 3D प्रिंटर हर घर में पाया जाता है. जो 3D प्रिंटर हर घर में पाया जाता है वो FDM ही होता है, बिकॉज द मटेरियल, द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इज वेरी लो. Therefore, the audience can use easily with the help of this printing machine. But the major disadvantage is lower resolution. What is the meaning of resolution here? It means accuracy. In terms of the accuracy, जो आपने printing parameter input कराया है, suppose आपने 0.1 का layer thickness लिया, तो वो तो जो print करेगा हो सकता है 0.125 भी हो सकता है, 0.123 भी हो जाए. The resolution is poor in this case. The basic disadvantage of this. Here I am showing the these are the basically the GIF image of the 3D material extrusion. यहाँ पे ये भी है, ये दूसरा जो इमेज आपको शो कर रहा हूँ, दिस आल्सो द 3D प्रिंटिंग टेक्निक्स. ये आपका यहाँ पे इंक एक्सट्रूड हो रहा है, यहाँ पे फिलामेंट आपके हीटेड नोजल से मेल्ट होके होता है, यहाँ इंक के फॉर्म में आपके नोजल से, एक सुई की नोजल से एक्सट्रूड हो रहा है.
वहीं आप देखिए जो डिसएडवांटेज आपका पाया जाता है रैपिंग होता है। रैपिंग क्या होता है, सपोज आपका मटेरियल डिपॉजिट हो गया तो आफ्टर सम टाइम वो एक किनारे से छूट जाता है। ताकि ये क्यों होता है, बिकॉज वी आर नॉट मेक द प्रॉपर बॉन्डिंग बिटवीन द वर्क पीस एंड द प्रिंटिंग बेड। अनदर प्रोसेस वेट फोटो पॉलीमराइजेशन। वेट मतलब क्या होता है, टब। टब में क्या होता है, फोटो मतलब लाइट, पोलराइजेशन मतलब देयर इज काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। तो वेट पोलराइजेशन जस्ट लाइक एसएलए एंड डीएलपी जो आपके लैब में है इस समय, आपके एमआईटी के महाराणा प्रताप के इंस्टीट्यूट कॉलेज में आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आपको मिलेगा एसएलए और डीएलपी का। वहां पे क्या होता है, दे आर यूजिंग द रेजिन। अभी आपको फिलामेंट और लिक्विड यूज हो रहा है, यहाँ हो रहा है रेजिन। रेजिन समझते हैं जस्ट लाइक इंक। इंक होता है ना, जैसे लाइक सॉस देखते हैं वो क्या रेजिन टाइप होता है, वही चीज यहाँ रेजिन यूज हो रहा है। यहाँ पे लिक्विड फोटो पॉलीमर मतलब जैसे ही फोटो मतलब लाइट पड़ेगी वहां पे वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्यूर्ड होने लगेगा लेयर बाय लेयर और सॉलिडिफाई हो जाएगा। यही आपका जो मैं दिखाना चाहूंगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे जो आपकी लाइट मूव कर रही है वो क्या है, यूवी रे है। यूवी रे आपके आपके एज पर जो कैड मॉडल मूव कर रहे हैं, जो आपने कैड मॉडल बनाया है उसी हिसाब से ये मूव कर रहा है एज पर द सॉलिडिफिकेशन एज कंप्लीटेड द प्लेटफॉर्म लिफ्ट अपवर्ड्स। द बेसिक एडवांटेजेस क्या है इसका, हाई रेजोल्यूशन। अभी मैंने बताया था एफडीएम का रेजोल्यूशन पुअर है, मतलब जो हमने लेयर थिकनेस डिसाइड किया उस हिसाब से लेयर थिकनेस नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे जो आप डिसाइड करोगे एग्जैक्ट वही चीज मिलता है। एंड स्मूथ सरफेस फिनिश द मेजर बेसिक एडवांटेज ऑफ दिस, बट द डिसएडवांटेज आर लिमिटेड मटेरियल टाइप्स। मतलब इसका जो मटेरियल की जो आपकी लाइब्रेरी है बहुत ही लिमिटेड है। आपके रेजिन ही 2-3 तरीके से यूज होते हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे लाइट पड़ रही है, फोटो में लाइट जैसे पड़ रही है वो उसी हिसाब से क्योर हो रहा है। और वहां पे क्या हो रहा था, आपका नोजल हीट हो रहा है तो वहां से मटेरियल एक्सट्रूड हो रहा है। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका दूसरा जीआईएफ इमेज है जो डीएलपी कहते हैं। एसएलए और डीएलपी में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, एसएलए में बेसिकली द रेज आर मूविंग पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, लेयर बाय लेयर, मतलब एक बार में आपका लेयर पूरा एक लेयर सॉलिडिफाई हो जाता है। यहाँ पे क्या है, पॉइंट टू पॉइंट मूव करता है। तो जो एसएलए डीएलपी में बेसिक डिफरेंस ये है, इट मूविंग, ये इट रिक्वायर्स हाई टाइम फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ पार्ट, इट रिक्वायर्स लो टाइम, मतलब इट टेकिंग स्मॉल टाइम टू फैब्रिकेशन ऑफ द पार्ट, बिकॉज सिंगल टाइम में पूरा क्लियर सॉलिडिफाई हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या रहा है, पॉइंट टू पॉइंट मूव कर रहा है। तो ड्यू टू दिस रीजन SLA having the good surface finish and high resolution as compared to DLP. नेक्स्ट पाउडर बेड फ्यूजन। यहाँ पे आपका मेटल और पॉलीमर का रोल आ जाता है। जो पाउडर मतलब क्या है, पाउडर बेड, मतलब ये सारा पाउडर आपके बेड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है जस्ट लाइक दिस, यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ दिस। एंड एज पर द लेजर आपका जैसे जैसे कैड मॉडल जो बनाएंगे उसी हिसाब से लेजर मूव करेगा, और जैसे हाई इंटेंस हीट जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ लेजर एंड सॉलिडिफाई एज पर योर कैड मॉडल। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे SLM सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो आपने कैड मॉडल बनाया उसी हिसाब से उस एरिया को मेल्ट कर रहा है, एंड इफ यू कैन फ्यूज अ मेटल पाउडर। एंड यही पाउडर बेड फ्यूजन दे आर वाइडली यूज इन द फैब्रिकेशन ऑफ मेटल पार्ट्स। मेटल पार्ट्स अब जो एग्जांपल देख रहे हैं, दे आर वाइडली यूजिंग जस्ट लाइक दिस। ये देख रहे हैं एज पर द कैड मॉडल the parts are fabricated। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पाउडर डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके बेड पे। अभी तक जो देख रहे थे उसमें क्या था, फिलामेंट था, प्लास्टिक था, यहाँ दूसरा क्या रेजिन था, यहाँ पे क्या है, मेटल पाउडर्स है। मेटल पाउडर्स को हीट करके सिंटर कर दिया जा रहा है, मतलब ज्वाइन कर दिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ लेजर। व्हाई द लेजर आर यूजिंग हियर, because laser is a very fine and very accurate heating device. It is not a distributed device, a converging. Therefore, we can solidify the parts as per the required CAD model. उसकी हीट का डिस्ट्रीब्यूशन वाइड नहीं होता है, वो बहुत ही कन्वर्ट होता है, इसलिए लेजर को वाइडली यूज किया जाता है फॉर द फैब्रिकेशन पार्ट विद द हेल्प ऑफ हीट। तो सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या है, हाई स्ट्रेंथ, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री वी कैन इजीली मेक, देयर नो नीड ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर, यहाँ सपोर्ट स्ट्रक्चर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, तो डिसएडवांटेज क्या है, इसका जो इक्विपमेंट होता है वेरी कॉस्टली होता है, करोड़ों में आता है। Therefore, it require very high precision, high requirement, high maintenance, और ये एनर्जी कंजम्पशन काफी हाई होता है। नेक्स्ट वी यूज अ बाइंडर जेटिंग। बाइंडर में समझते हैं, बाइंडर मतलब क्या, बाइंड करना, बांध के रखना, मींस विद द हेल्प ऑफ सम बाइंडर, जस्ट लाइक एक फेविकॉल है, फेविकॉल क्या एक बाइंडर है, उसी तरह यहाँ बाइंडर यूज किया जाता है फॉर द आपके मटेरियल्स को बाइंड करने के लिए।
तो यहाँ पे होता क्या है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, हेयर वी डिपॉजिट द बाइंडर। यहाँ पे आपके जो स्लेटी पार्ट है वो आपके मेटल पाउडर है, जो यहाँ पे स्लेटी पार्ट है वो मेटल पाउडर है, और and here we deposit the binder, and with the help of binder the parts are fabricated. As compared to the previous manufacturing process, it is faster than PBF, no heat distortion, and can print large parts. And the main disadvantage due to the binder using it having the poor mechanical strength as compared to the powder bed manufacturing. नेक्स्ट मटेरियल जेटिंग। यहाँ पे आप देख रहे थे बाइंडर, मतलब एक बाइंडर को जेट किया जा रहा है। यहाँ पे क्या जेट किया जा रहा है, आपके मटेरियल्स को, जस्ट लाइक दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स आर डिपॉजिटेड एंड सॉलिडिफाइड बाय यूवी लाइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मटेरियल आपको डिपॉजिट करना है वो आपका जेट के थ्रू डिपॉजिट हो रहा है, और यूवी रे आ रही है और आपके पार्ट्स को फैब्रिकेट कर दे रही है। यूवी रेट यहाँ पे क्या यूज, वाई वी यूजिंग यूवी रेट, उसको क्योर करने के लिए यूवी रेज का यूज किया जा रहा है ताकि उसमें हीट से वो मटेरियल क्योर हो जाए। इसका बहुत ही फेमस आपका प्रिंटर एचपी का आता है, एचपी का बहुत ही फेमस प्रिंटर आता है जिसमें मटेरियल जेटिंग से, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या आता है, हम कलरफुल पार्ट्स भी बना सकते हैं, आपके कलरफुल पार्ट्स भी बन सकते हैं, इसमें 2 डिफरेंट कलर भी यूज करके हम कलरफुल पार्ट्स बना सकते हैं। Next, the widely used material is direct energy deposition. This is direct energy deposition. It is a focus to a thermal energy. क्या डिफरेंस होता है आपके डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन और पाउडर बेड फ्यूजन में? वहां पाउडर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ पे क्या होता है, पाउडर आपके नोजल के थ्रू फ्लो होता है, वहां पे कहीं पाउडर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। जस्ट लाइक वेल्डिंग देखे होंगे, वो क्या है, वेल्डिंग आपने किया होगा, वेल्डिंग क्या होता है, इट इज डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन, वहां मटेरियल और हीट दोनों आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और प्लेटफॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं, वैसे ही आपका डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, थर्मल एनर्जी फोकस है, और ये आपका प्रोसेस जनरली पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, और ये इसका लेकिन द बेसिक डिसएडवांटेज इज सरफेस फिनिश इज पुअर, कॉम्प्लेक्स सेटअप्स एंड लेस एक्यूरेट देन पीबीएफ। नाउ एज वी सीन द डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, we have started the lecture from the what is additive manufacturing, what are the basic steps involved in additive manufacturing. We have seen the classification of additive manufacturing. Now going to see the industrial application of the additive manufacturing. Additive manufacturing का industrial application बहुत ही wide है, हर एक कोई भी कैटेगरी बचा नहीं है where we using the additive manufacturing. If you starting the I am going to explain this, the picture of the old engine. ये इंजन आपका 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में यूज किया है। अब ये जो आपको इंजन दिख रहा है, these are the advanced engine. Here the parts are manufacturing with the help of 3D printing. If you taking examples of the GE, आपने GE का नाम सुना होगा, जनरल इलेक्ट्रिक इज वेरी फेमस एंड वेरी बिग इंडस्ट्री, जो आपकी फ्यूल नोजल बनाती है। फ्यूल नोजल मतलब फ्यूल, जहां से फ्यूल इंजेक्ट होता है आपके इंजन में, और ये फ्यूल नोजल द शेप इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इनिशियली उसको 20 सेपरेट पार्ट्स बनाने होते थे, फिर इसको असेंबल करता था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग दे फैब्रिकेट द पार्ट इन ए सिंगल वे, दे फैब्रिकेट द पार्ट इन ए सिंगल वे एंड बेसिकली यूज इन द आपके जेट फाइटर्स में, एविएशन में यूज होता है। नेक्स्ट वी सी द इन हेल्थ केयर में दे आर बेसिकली यूज अ प्रोस्थेटिक लिम्स। ये देख रहे हैं प्रोस्थेटिक लिम्स, जिसके पैर कट जाते हैं, एक्सीडेंट पे चले जाते हैं, उनको ये एज पर द रिक्वायर्ड कैड मॉडल they fabricate the prosthetic limbs for the person who having no legs. Similarly, ये आपका एफी डेंचर है, ये आपका जो आपको जॉ होता है, आपका जबड़ा होता है, ये आपका है बेसिकली। ये जो एफी डेंचर है, ये मेरे रिसर्च का पार्ट है जो मैंने पीएचडी वर्क में डेवलप किया था विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट इंक राइटिंग इट थ्रू। एज वी सी फॉरवर्ड्स, ये देख रहे हैं आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स हैं जो आपके हड्डियों के बीच में लगा रहता है, ये भी आपका विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग फैब्रिकेट किया जाता है। नेक्स्ट इज ये आपका बायोमिमिक ईयर है। ये ईयर ऐसा है जो आपके, जिनके जैसे वॉर होता है, वॉर में सोल्जर्स के कान कट जाते हैं या एक्सीडेंट से कान कट जाते हैं, वी कैन इजीली फैब्रिकेट द ईयर विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग। और ये ईयर वी कैन जैसे हम लगाएंगे, वो ये आपके जो ईयर होते हैं ये आपके लाइव सेल्स से फैब्रिकेट किए जाते हैं, लाइव सेल्स से, और जैसे आपके ईयर में ये आपके बॉडी में टच करेगा, ये तो ये उसको रीजनरेट होके सेम ईयर बन जाता है ये। सिमिलरली वी कैन सी द 3D प्रिंटेड हार्ट, जो आपका हार्ट है, हार्ट में भी कोई प्रॉब्लम है, उसका रिप्लेसमेंट है, तो वो भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग। आफ्टरवर्ड्स वी कैन सी द वाइड एडवांटेजेस। ये देख रहे हैं, ये एडिडास का शू है जो 3D प्रिंटेड है। ये कस्टमाइज्ड शूज है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एथलीट्स एंड शेप एंड साइज ऑफ द लेग्स
this shoes basically manufactured with the help of 3D printing. नेक्स्ट बुकाटी, आपने बुकाटी कार का नाम सुना होगा। यह बुकाटी की ये शेप देख रहे हैं, ये आपका ब्रेक कैलिपर्स हैं जो बेसिकली 3D प्रिंटेड से बना है, जो आप बुकाटी अपने कार में यूज करता है। हाउ by seeing this diagram we can easily understand what kind of complex shape they have, and by the help of 3D printing there is a titanium brake has been prepared with the help of powder bed fusion technique. Further, यहाँ पे आपने देखा कि we have seen the different advantages in the area of the medical, in the area of shoes, porcelain, healthcare. यहाँ पे आप 3D printing आप आपके फूड में भी यूज हो रहा है। यहाँ पे 3D printed fake meat प्रिपेयर किया जा रहा है with the help of plant based meat से। यहाँ प्लांट बेस्ड मीट आपने सुना होगा। फेक मीट का मतलब क्या है? दे आर द सेम एडवांटेज, सेम टेस्ट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स एंड दे डेवलप द मीट। इससे क्या हो रहा है? वी आर अवॉइड द स्लॉटरिंग ऑफ द एनिमल्स। We can, with the help of 3D printing, we can fabricate the cakes as well pastries with our 3D printing. These are 3D printed meat they have developed with the help of 3D printers. And these are the wide applications. These are the wide application of 3D printing in the area of in industrial as well as commercial way. After this, we are going to move in the material. What kind of material basically using in the area of additive manufacturing? There are wide range of material available in the area of additive manufacturing. The wide range, the polymers, metals, ceramic, and composites. The first one is the polymers. If you've seen the FDM हमने देखा, पहला ही जो देखा क्लासिफिकेशन में FDM, they are using the polymers. What kind of polymers they are basically using? There are two type of polymers. Thermoplastic basically using in the area of 3D print. Why we using the thermoplastic in the FDM like PLA, ABS? Because thermoplastic ही है जो heat के, thermoplastic is a kind of plastic we can recycle and change the shape under the application of heat. अब वही thermosetting होगा वो क्या हो जाएगा? वो एक बार चेंज होगा, उसका चेंज क्या परमानेंट हो जाएगा। वी आर नॉट एबल टू चेंज द शेप, देयरफॉर द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल आर यूजिंग इन द एरिया ऑफ 3D प्रिंटिंग। सिमिलरली फोटोपॉलीमर्स हमने SLA में देखा, वी हैव सीन द फोटोपॉलीमर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट, so we can change the shape of the polymer with the help of photopolymerization. These are the various applications: PLA, ABS, nylon, photopolymers. Further, metals हमने देखा, ब्रेक कैलिपर्स देखा जिसमें टाइटेनियम अलॉय, स्टेनलेस स्टील टूल्स। ये जो मैंने बहुत ही लिमिटेड मटेरियल यहाँ पे शो किया है, इसके बावजूद बहुत सारे आपके रेंज है आपके मेटल्स के जो वाइडली यूज किए जा रहे हैं इन द एरिया ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे वी कैन सी द डिफरेंट शेप एंड साइज एंड प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग। फर्दर, ceramics, you know what is the ceramics here? Ceramics समझते हैं क्या होता है? What is ceramics? Ceramics वो materials होते हैं, they are available which having a good compressive strength, good heat resistance, just like a brick. Brick देखा होगा, ईंट जो होती है वो ceramic, बालू, मिट्टी, चीनी मिट्टी, ये क्या है आपके ceramics? आपके दांत क्या है? ceramics क्या है? ceramics हैं, ceramics material से बने हुए हैं। और जो आपके नाखून होते हैं, this is also called as ceramics. Ceramics is that material which does not lie in the category of polymer, metals, non-metals, and organic polymers. These are the ceramic materials, just like a zirconia, calcium phosphate. Okay, so these are the different types of ceramic materials. And with the help of 3D printing, we can also make the teeth caps. जैसे देखते हैं कई लोगों के दांत खराब हो जाते हैं, कैविटी हो जाती है जिसके नए दांत लगाने पड़ते हैं. We can also manufacture with the help of 3D printing techniques. The teeth cap are basically using and they implant inside the jaw of the patient. Further, we have seen the composite. You know the composite material. Composite क्या होता है? Composite is called a sandwich of a material. Sandwich समझते हैं, sandwich खाया होगा आपने. Sandwich क्या होता है? एक ऊपर ब्रेड लगा दिया, बीच में चीज लगा दिया, और नीचे फिर ब्रेड लगा दिया. It's called a composite. वही चीज यहाँ पे होता है. मतलब क्या है यहाँ पे? ऊपर आप पॉलीमर लगा दिए, बीच में कार्बन फाइबर लगा दिए और नीचे फिर पॉलीमर लगा दिया. It's called a sandwich. इसमें ये आपका सैंडविच मटेरियल को कहते हैं कंपोजिट मटेरियल्स. और कंपोजिट मटेरियल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? एक तो लाइट वेट होता है, इट्स हैविंग गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. देयरफॉर द कंपोजिट मटेरियल्स आर वाइडली यूज्ड जस्ट लाइक कार्बन फाइबर्स, ग्लास फाइबर्स. यहाँ पे कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? फाइबर्स के बीच में लगा हुआ है, इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ. ये ग्लास फाइबर क्या है? ये फाइबर के बीच में लगा हुआ है. दीज आर द ग्लास फाइबर्स. रेनफोर्समेंट की तरह यूज होता है. दीज आर द मटेरियल इमेज ऑफ द कंपोजिट मटेरियल. दीज आर द डिफरेंट शेप साइज ऑफ द कंपोजिट मटेरियल्स.
The next one is the very smart materials. आपने देखा अभी metals देखा, polymers देखा, ceramics देखा, composite देखा. अब ये shape memory alloys. Shape memory alloy क्या है? ये ऐसा smart materials है जो अपना shape और size remember रखता है. मतलब what it means? It means it when the temperature or pressure reach, it can regain their shape and size. ठीक है? जैसे if you see the example just like this, we apply some pressure, the material deform and change their shapes. Next we see the if you ये जैसे मेरे ये इन्होंने यहाँ पे डाला गर्म पानी में, they can change the shape of the material. It's called a shape memory, or we can say smart materials. Smart materials are widely using in the area of anti manufacturing. Smart materials का use आपके स्टंट बनाने के लिए ये होता है. स्टंट जो आपके वेन्स में पड़ते हैं, जिनके वेन्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिनके वेन्स ब्लॉक हो जाते हैं, उसमें ये स्टंट बेसिकली यूज किया जाता है फॉर अवॉइडिंग द ब्लॉकेज ऑफ द वेन्स, जो आपको अवॉइड करता है कार्डिक अरेस्ट होने से. Is called a shape memory alloys. Then we have seen what is the additive manufacturing, what is the steps are involved with additive manufacturing. We have seen the different classification of additive manufacturing. We have seen the different application of the additive manufacturing. We have seen the different materials used in the additive manufacturing. Now we see the market and a future scope. What kind of market trends and future scope है regarding the additive manufacturing? Please listen carefully. ये आपके futures के regarding बहुत important है. If you see the करंट ट्रेंड क्या है मार्केट का, व्हाट इज द करंट ट्रेंड? करंट ट्रेंड क्या है? इंडस्ट्री लाइक एरोस्पेस, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव. यहाँ देख रहे हैं, वी हैव सीन द मेडिकल इम्प्लांट्स, शूज बन रहे हैं, रेडीमेड आपके पार्ट्स बन जा रहे हैं. तो दीज आर द फंक्शनल एंड यूज पार्ट. मतलब वो पार्ट जो बनेगा, देयर इज नो रिकॉर्ड पोस्ट प्रोसेसिंग, आपने बनाइए और यूज करिए. आप वो चीजें यूज कर सकते हैं. हेल्थ केयर हुआ, चाहे एरोस्पेस हुआ, चाहे ऑटोमोटिव हुआ, वी कैन फैब्रिकेट एंड यूज. ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग मतलब वी हैव now shifting the digital inventory. Digital inventory क्या है? It means design to print. मतलब digital inventory मतलब क्या है? We can storing the different design of the parts. जो जिसकी जरूरत है वो वही बन जा रहा है. There no requirement of minimizing the which minimize the waste and limit the maximum bearing cost. मतलब होता है ना कि आप अभी तो कि आपने parts बना के आपने रख लिया है, वो नहीं है. आपने इन्वेंट्री का स्पेस को हटाने के लिए हमने उस फाइल को डिजिटली स्टोर किया है. जरूरत है हमने प्रिंट किया और फिर हमने एंड यूज के लिए प्रोवाइड कर दिया. अगर ये फ्यूचर स्कोप देखें तो फ्यूचर स्कोप में क्या है? वी कैन यूटिलाइज द 3D प्रिंटिंग टेक्निक इन द एरिया ऑफ बायो असेंबली एंड मेडिसिन. वी कैन आल्सो फैब्रिकेट द मेडिसिन tablets with the help of 3D printing. We can fabricate the ear, like this. I have seen the ear, tissue ear. We can sustainable architecture. What is sustainable architecture? But it means robotic printers. आपने पता होगा ये यूएसए में एक कंपनी है जिन्होंने अभी 3 दिन में घर बना के डिलीवर कर दिया था. तो वह सस्टेनेबल आर्किटेक्चर वी कैन फैब्रिकेट. इंटायर हाउस वी कैन फैब्रिकेट विद द हेल्प ऑफ द 3D प्रिंटिंग. मल्टी मटेरियल. तो मल्टी मटेरियल समझते हैं, व्हाट इज द मल्टी मटेरियल? एक से ज्यादा मटेरियल एक ही पार्ट्स में है. एक से ज्यादा मटेरियल वी आर बेसिकली यूजिंग विद द हेल्प ऑफ एक लेयर आपने ए मटेरियल को डिपॉजिट किया, दूसरा लेयर आपने बी मटेरियल डिपॉजिट किया, तीसरा आपने सी मटेरियल डिपॉजिट किया. बाय दिस वे वी कैन फैब्रिकेट द पार्ट्स लेयर बाय लेयर. एंड दिस मल्टी मटेरियल टेक्निक वी कैन बेसिकली यूज इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, रोबोटिक्स. इंटीग्रेटेड पार्ट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. हो भी रहा है. These are the basically AI generated image. We can see the picture of the current and future scope innovation of the 3D printing. We have seen these are the current techniques. We can fabricate the part, and here we develop the heart, here we develop the ear, here we fabricate the house with the help of 3D printing technique. Now, what's the job opportunity and career pathway? Job opportunity, what is the kind of job opportunity? The first is the CAD designer. मैं बता दूं, currently the if you search the CAD designer job role in LinkedIn, you will find the large number of the inquiry on them. CAD designers play a very important role currently. CAD designer create the initial digital 3D model and optimize the geometry. AM engineer in the bridges design and production selecting. मटेरियल साइंटिस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अभी मैं बता रहा हूँ कि जो आपके जो पीबीएफ की बहुत बड़ी कंपनी है, आई फॉरगेटिंग द नेम, दे हैव कंटिन्यूअसली इंक्वायरी अबाउट द recruit the person who belong from the material scientist role, and they providing good some salary in the area of the additive manufacturing. Next we see the software and data science. We can
use as a role as a AM software developer, write and slice algorithm, simulation engineers, data analyst for additive manufacturing. मतलब we can analyze the data. देखिए जो भी मशीन वो डेटा जनरेट करता है, डेटा को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल, कौन सा पैरामीटर हमारे लिए बेनिफिशियल है फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ एनी पार्ट. We can use the material as a, we can recruit as a data analyst for the additive manufacturing. Next we see the मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन. यहाँ तो आपने डिजाइन की बात हुई, यहाँ सॉफ्टवेयर की बात हुई, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मतलब एएम प्रोसेस टेक्नीशियंस ऑपरेट्स, मॉनिटर्स एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल स्केल 3D प्रिंटर्स, क्वालिटी कंट्रोल्स मतलब जो पार्ट्स फैब्रिकेट हो रहे हैं उसको इंस्पेक्ट करके बताया कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी दे हैव. क्वालिफिकेशन स्पेशलिस्ट, पोस्ट प्रोसेसिंग. देखिए आपके 3D प्रिंटिंग में 4 मेजर स्टेप्स मैंने तो आपको दिखाया, एक 5वां स्टेप भी होता है पोस्ट प्रोसेसिंग का. पोस्ट प्रोसेसिंग क्या, पार्ट्स बनने के बाद क्या पॉलिशिंग हो रही है, क्या सरफेस क्लीनिंग हो रही है, वो डिसाइड करना बहुत बड़ा रोल होता है. तो इसके रिगार्डिंग पोस्ट प्रोसेसिंग इंजीनियर्स भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं जो बेसिकली वर्क ऑन द पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स. एंड दीज आर द नेक्स्ट वन द बिजनेस एंड ऑपरेशंस. मतलब आप एएम कंसल्ट बन सकते हैं, एडवाइज द कंपनी हाउ इंटीग्रेट द 3D प्रिंटिंग विद द वर्क फ्लो एंड रिड्यूस कॉस्ट. सर्विस ब्यूरो मैनेजर भी आप देख सकते हैं, ओवरसी द प्रिंट ऑन डिमांड फैसिलिटी. Technical skills and application engineers use technical expertise to sell advanced printing equipment to demonstrate tailored solution to clients. These are the various paths. We have seen the manufacturing. There is a green path. It is a blue engineering and design. It is a orange path. It is a software data science. And the purple path is the business and operation. These are the 4 paths which are based going to the current career pathway regarding the 3D printing. Further, what kind of startup opportunities in 3D printing? आप लोग सोच सकते हैं कि हम क्या स्टार्टअप इन फ्यूचर में लोग बिल्ड कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस. अगर स्टार्टअप की बात करें तो देयर आर द 4 मेजर कैटेगरीज व्हिच आर बेसिकली हैविंग द गुड फ्यूचर एस्पेक्ट रिगार्डिंग दिस. इको फ्रेंडली फिलामेंट्स में समझ सकते हैं. मतलब जो फिलामेंट्स आप एफडीएम में मैंने दिखाया, दे आर यूजिंग द फिलामेंट्स. वी डेवलप द बायोडिग्रेडेबल फिलामेंट्स, प्लांट बेस्ड फिलामेंट्स, नॉन टॉक्सिक फिलामेंट्स. क्योंकि जब ये प्रिंट होते हैं तो फ्यूम्स जनरेट होते हैं और फ्यूम्स बहुत टॉक्सिक होते हैं. तो इस तरह की आपको रिप्लेसमेंट के लिए आप बायोडिग्रेडेबल रिसाइकिल फिलामेंट्स यूज कर सकते हैं. इंजीनियरिंग जैसे मैंने बताया, इंजीनियरिंग स्पेशलाइज्ड पाउडर्स, फिलामेंट मिक्स विद कार्बन फाइबर, मेटल सिरामिक्स, मेटल शीट. इंडस्ट्रियल जैसे कि आप फंक्शनल कंपोजिट समझते हैं. फंक्शनल कंपोजिट का मतलब होता है एक ही फिलामेंट्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे मटेरियल मिक्स हैं, तो वो डिफरेंट फंक्शनल पार्ट्स के लिए फैब्रिकेट होने के लिए पॉसिबल हो सकता है. जस्ट लाइक इफ यू टेक एग्जांपल द कंपोजिट फिलामेंट्स, जिसमें मैंने दिखाया था मल्टी मटेरियल्स को यूज हो रहे हैं. नेक्स्ट देख सकते हैं सॉफ्टवेयर एआई ड्रिवन स्लाइसिंग. एआई ड्रिवन स्लाइसिंग क्या है? देखिए स्लाइसिंग बहुत बड़ा रोल होता है आपके एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में. तो स्लाइसिंग अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकें तो ये भी एक टेक्निक होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग. स्लाइसिंग दूसरा क्या है? क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट में जो भी डेटा है उसको हम मैनेज कर रहे हैं, जस्ट लाइक फॉर क्रिएटिंग द क्लाउड मैनेज. ये एक बहुत अच्छा स्टार्टअप हो सकता है. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब जब आपकी रिक्वायरमेंट हो तो उसको वहां से एक्सेस कर ले. ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस फ्लो, मतलब जो आपका डिमांड हो, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग, सेटिंग द हाई लोकलाइज्ड एजाइल नेटवर्क, मतलब जो जहां रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से वहां प्रिंट करके उसको प्रोवाइड करा दिया. देयर नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ बाय सप्लाई चेन की जरूरत नहीं है. मतलब को आप पार्ट बना के स्टोर नहीं कर रहे हैं, जब आपको जरूरत पड़े तो आपने पार्ट को फैब्रिकेट किया, आपने प्रोवाइड कर दिया. जस्ट लाइक जस्ट इन टाइम फैसिलिटी. आपने देखा होगा ऑडी होती है, मर्सिडीज होती हैं, वो गाड़ियां आपके बन के स्टोर में नहीं खड़ी रहती हैं, जब कस्टमर डिमांड रेज करता है तब वो बनती हैं. तो इस तरह की फैसिलिटी आप ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. हेल्थ केयर एप्लीकेशंस, मेडिकल फोकस ब्यूरो, जस्ट लाइक आपने दिखाया, मैंने आपको दांत के कैप, टीथ कैप दिखाया, आपके लंग्स दिखाए, आपके हार्ट दिखाए, आपके स्टेंट्स दिखाए. दीज आर द बेसिकली द हेल्थ केयर एप्लीकेशन. वी कैन आल्सो यूज दिस. एंड सस्टेनेबली रिसाइकिल कोऑर्डिनेट, सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके ये प्लास्टिक बेस्ड अब रिसाइकिल. प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जो आपका डिग्रेड नहीं होता है, तो वी कैन यूज द रिसाइकिल प्लास्टिक. मतलब सबसे बड़ा एडवांटेज एडिटिव के साथ क्या है कि आप मटेरियल जो आपके थोड़े बच भी जाते हैं उसको भी रिसाइकिल करके फिर से फिलामेंट बना सकते हैं आप. तो वी कैन creating the localized system of machines that grind and down failed prints, plastic bottles, industrial waste back into the high quality. मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट को यूज करके भी फिलामेंट बना सकते हैं, बिकॉज मटेरियल्स आर बेसिकली यूजिंग द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स.
तो उस पॉलीमर को यूज करके आप फिलामेंट बना सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज और स्टार्टअप यूज हो सकता है। अब बहुत ही कम बजट में ये सस्टेनेबल रिसाइकिल आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्डिंग कम्युनिटी ड्रिवन रिसाइकिल नेटवर्क, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल दैट टर्न लोकलाइज प्लास्टिक पॉल्यूशन डायरेक्टली वैल्यूएबल। ये क्या है कि जब प्लास्टिक अब यूज करने लगेंगे तो प्लास्टिक पॉल्यूशन की जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है आपके नेचर को, वो आपको रिड्यूस कर सकता है। तो दीज आर द वाइड रेंज ऑफ द स्टार्टअप्स। पहला था आपका स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स का, दूसरा क्या है सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स का, तीसरा आपका है कि आप ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तीसरा क्या है सस्टेनेबल रिसाइकिल, जो मतलब वेस्ट के द्वारा, मतलब इसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है, इसको बिना कॉस्ट के आप एक छोटे से बजट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दीज आर द वाइड रेंज ऑफ द स्टार्टअप, जस्ट लाइक इको फ्रेंडली फिलामेंट्स बनाना, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स करना, आपका ऑन डिमांड सर्विस देना, चौथा क्या है आपका सस्टेनेबिलिटी रिसाइकिल प्रोवाइड करना, मतलब वेस्ट को यूज करके आप फिलामेंट्स बना दे रहे हैं और वही आप मार्केट में प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। These are the various range of startups, and the students we can explore in them in the better way in the different fields, just like eco-friendly filaments, on-demand manufacturing services, software and platforms, and sustainable and recycling. And thank you for this presentation. Any question? Thank you, sir, for your insightful session. Now, I request the participant to raise your hand for any question. We'll happy to address them. I request Amritansh Mishra to unmute yourself and ask your question. Sir, I have a question. Yes. Sir, recently there was some news about 3D printed houses. May you please enlighten us upon this? देखो, let's see. 3D printed houses, it means if you see the example of the if you just like a 3D printing, here the material extruded through the nozzle, right? आपका जब आपने CAD मॉडल बना लिया, तो जब हमने CAD मॉडल बना लिया तो CAD मॉडल आपने कमांड दे दिया रोबोटिक आर्म को, रोबोटिक आर्म उसी हिसाब से उसको चीजों को डिपॉजिट कर देगा विद द लेयर बाय लेयर डिपोजिशन। वहां पे क्या है कि यहाँ पे लेयर बाय लेयर एडिशन है, वहां पे क्या है कि तो ये लेयर बाय लेयर एडिशन, ये तो क्या है कि आपकी चीजों को डिपॉजिट भी कर रहा है और इजिली मैन्युफैक्चर भी कर दे रहा है विद इन ड्यू टाइम में। तो इसमें जो आपका लेयर का डिपोजिशन है वो काफी इजिली स्मूथली, वहां जैसे आप एक कन्वर्शन टेक्निक लीजिए जहाँ पे आपके मिस्त्री हैं, वर्कर्स हैं, और ब्रिक बाय ब्रिक को जोड़ रहे हैं और एक दीवार खड़ा करने में सुबह से शाम लगा दे रहे हैं। वही आपका 3D प्रिंटर है, वो सुबह से शाम में आपके घर का आधा पार्ट बना दे रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे एक्यूरेसी है, फास्ट वर्क है, मटेरियल का डिपोजिशन एक्यूरेट है। तो ये चीजें सिंपली वही प्रोसेस को फॉलो कर रहा है जो आप सिंपल पार्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। पहला क्या है, CAD मॉडल बनाइए, दूसरा क्या है कि आपको स्लाइस करिए, और फिर स्लाइसिंग जब करते हैं, स्लाइसिंग में एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में कितना गैप होना चाहिए वो डिसाइड करिए। जब जैसे वो चीजें कर लेंगे, फिर कमांड जैसे देंगे, मटेरियल को बस फ्लो कराते जाइए और लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करता जाएगा। समझ रहे हैं? Yes, Thank you, sir. sir. I request Yasser Lari to unmute yourself and ask your question. Hello. Yes. Sir, I have a question. What is bioprinting? देखो, bioprinting, the term known as bio, it means the material which are using in the printing is compatible to the human body. It's called a bioprinting. मतलब जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं प्रिंटिंग के लिए वो बॉडी के लिए कंपेटेबल है, कि मतलब अब वो बॉडी में आता है, इम्प्लांट होता है, तो वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स रिलीज नहीं कर रहा है। इट्स कॉल्ड अ बायो प्रिंटिंग। जैसे आप जैसे कि आपको चोट लगती है तो आप टांके लगे होंगे आपके, कभी भी जिम में लगाओ नहीं लगाओ तो देखा होगा आपने, जो टांके होते हैं वो जो मटेरियल यूज हो रहा है आपकी बॉडी में इंसर्ट हो रहा है, वो एक तरह का बायो कंपेटेबल मटेरियल है जिसकी वजह से आपकी बॉडी हार्म नहीं हो रही है। तो उसी तरह का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं प्रिंटिंग में, और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है और बॉडी में इम्प्लांट हो रहा है, तो उसकी वजह से वो टॉक्सिक प्रोडक्ट रिलीज नहीं कर रहा है, बायो प्रिंटिंग। समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपको ईयर दिखाया, ईयर क्या था, वहां पे लाइव सेल्स, जो सेल्स आपकी बॉडी सेल्स से बनी हुई है,
तो वहाँ आर्टिफिशियल सेल्स जनरेट किए जाते हैं, उस सेल्स का इंक बनाया जाता है और एज पर द कैड मॉडल इंक उसी हिसाब से डिपॉजिट करता है और आपका कान बन जा रहा है। और कान आपके बॉडी में जैसे ही उसको इम्प्लांट किया जा रहा है तो वो रीग्रो कर जा रहा है, जैसे जैसे आपकी हड्डी टूटने के बाद रीग्रो कर जाती है, उसी तरह कान आपके बॉडी में रीग्रो कर जा रहा है। Okay, sir. Okay, right. Vyash Thank you, sir. Mishra, please unmute yourself. यस मैम। सर कंप्यूटर साइंस एंड एलिड ब्रांच के स्टूडेंट इस एरिया में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए कंप्यूटर साइंस तो बहुत सही क्वेश्चन पूछा। देखिए कंप्यूटर साइंस में क्या है कि जैसे कि आप डेटा के साथ आप प्ले करते होंगे, आपको AI/ML चीज़ें आती हों या सीखेंगे, तो AI/ML से बहुत सी चीज़ें आप सीख सकते हैं। कि जैसे कि आप यहाँ पे क्या होता है, प्रिंटिंग पैरामीटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब किस प्रिंटिंग पैरामीटर से हम प्रोडक्ट बनाएं कि मेरा प्रोडक्ट बहुत ही स्ट्रांग बने। तो जो मैंने स्लाइसिंग का जो पार्ट बताया था उसमें हम लेयर थिकनेस, इनफिल डेंसिटी, बहुत सारे पैरामीटर्स को हम लोग पहले पायलट एक्सपेरिमेंट के थ्रू इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा पैरामीटर हम यूज करें जिसके द्वारा जो पार्ट्स बने बहुत स्ट्रांग बने। तो उसमें आप अपना AI/ML यूज करके प्रोसेस पैरामीटर को एनालाइज कर सकते हैं और बाय यूजिंग दिस वी कैन ऑप्टिमाइज द प्रिंटिंग पैरामीटर। तो ये प्रोसेस ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के कॉस्ट को घटा देगा। मतलब जो पायलट एक्सपेरिमेंट का कॉस्ट करीब आपकी 6 महीने का चलता है, तो वो आपका वो पार्ट बहुत बड़ा रोल निभाएगा कि ताकि हम उसके चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकें और जिसके द्वारा हम प्रिंट करें तो पार्ट बहुत अच्छा बने। तो वहाँ पे आप अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिस्ट का रोल बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। थैंक यू सर। Any more question? No, ma'am. No question. आनंद गुप्ता, Yes. आनंद गुप्ता अनम्यूट। गुड आफ्टरनून सर। हाँ आनंद सर हम लोग जो भी ईयर्स या तो फिर जो बोन्स के बारे में सर बता रहे थे जो हैंडीकैप है पैर के लिए, उनके लिए सर हम लोग कौन सा प्रोसेस मेनली यूज करेंगे? देखो डियर, जैसे मान लो आप जैसे कि MRI का नाम सुना होगा। MRI होता है, CT स्कैन यस होता है, सर। राइट? यस MRI क्या होता है कि बॉडी का पार्ट्स को स्कैन करता है। वो स्कैन यस सर। करेगा तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन ले लेता है कि कहाँ से क्या क्या उनके क्या कमी है, कहाँ पे क्या चीजें हैं। तो उस MRI के डेटा को यूज करके हम कैड मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। एक सॉफ्टवेयर आता है डीकॉम फाइल में, इसको क्या MRI के डाटा को हम डीकॉम फाइल में कन्वर्ट करते हैं, फिर वहां से हम उसको कैड मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। तो MRI आपका एक्यूरेट डाटा है जो बायो से आपको लिया गया है, MRI स्कैनर से लिया गया है जो ऑलरेडी एक्यूरेट रहता है। तो उसके द्वारा हम कैड मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, कैड मॉडल से हम पार्ट्स को बनाते हैं, फिर वही चीज हम बॉडी में इम्प्लांट कर देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और किसी के कोई क्वेश्चंस है आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और हमारे रिस्पेक्टिव ग्रुप में आप भेज भी सकते हैं। So, a wonderful and enlightening session. I think there are no more hand raises now. Yes. Thank you so much, Dipesh sir. It was Thanks a lot, so sir. insightful and full of knowledge. The detailed discussion on the classifications, the steps involved, the processes. I think that was a wonderful presentation, sir. It takes a ton of hard work to create such presentations. You have added videos, which even it was informative and helpful for me. It is very resourceful for me also. So Yes, the sir. processes, the animations, I think the student must have explored a lot in this area, the classification, the processes, market trends and startup opportunities you discussed in quite detail. So this was a wonderful experience for all of us. Thank you so much for joining and addressing the questions of these students. This is first of our initiatives and we are very happy to have met with you, sir. And thanks a lot. Madan Mohan Malviya University of Technology has been one of the pioneers in establishing this Center of Excellence in Gorakhpur, and we are very thankful to the university, to Vice Chancellor sir, to the faculties and department. We'll keep in touch with the Department of Mechanical Engineering, especially with you and the head of department, Professor Sanjay Mishra sir. So this would lead
pathways for collaborative research, for Exactly. training and upskilling, transforming this region. Yes. Wonderful explanation and presentation about how there are opportunities for CS and allied students as well in software development, in analytics. Yes. So I think a wonderful start of this 5-day program. Thank you so much. A ton of thanks, sir. Oh, it's my pleasure, sir. Thanks. Thanks a lot. So any suggestions or advice from you, we would be very welcome to. अरे नहीं सर, सब बढ़िया है. करिए करिए, आप लोग अच्छे से करिए सर. My best wishes with you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत. Okay, sir. Bye. आप सभी पार्टिसिपेंट्स जो इसमें हमारे साथ जुड़े रहे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस जर्नी ऑफ 5 days and wish you a very good day ahead. We will meet again tomorrow. So कल के सेशन में कंप्यूटर एडेड डिजाइन स्किल डेवलपमेंट में ये आपके लिए यूजफुल है, सॉलिडवर्क्स और कैड के थ्रू, जो विच इज द वेरी पिलर ऑफ दिस 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री. और ऐसे करके हम इस 3D प्रिंटिंग डोमेन में धीरे धीरे फेज बाय फेज आगे बढ़ेंगे. We will have experts from Philips Machine Tools tomorrow. So industry oriented session it would be. I wish to see all of you present in the tomorrow's session. Thank you so much. Thank you, ma'am, for making this online program a very wonderful and smoothly streamlined event. Thank you everyone for attending and participating here. Thank you. Wish you a very good day ahead. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, and have a wonderful day. Thanks.